Hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see, or yes, all to see by hopefully all aa jaye because it is going to be a historic occasion, not just for Real Madrid, but definitely Frankfurt bhi. और वो तो हम डिस्कस करेंगे एज यू मस्ट हैव फिगर इट आउट बट इट्स बिन क्रेजी इन द ट्रांसफर मार्केट बहुत सारा न्यूज आ रहा है और यस होपफुली वील हैव मोर पीपल ज्वाइनिंग होपफुली या लोग जाने या हम भी बात करते हैं फुटबॉल के बारे में और हम भी करने वाले काफी सारे बात एंड टू एंड एज ऑलवेज फॉर यू ऑल एंड एवरीवन इज वेलकम भाई सब लोग कर लीजिए शेयर लाइक होपफुली वील हैव मोर पीपल जॉइनिंग इन एंड यस अगर और थोड़ा सपोर्ट मिले तो अच्छा लगता है यार एज अ कंटेंट क्रिएटर दैट ऑलवेज हेल्प्स ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ लव दैट आई हैव बीन गेटिंग बट होपफुली वी गेट टू द 5K जो टारगेट है एंड यार क्लोज टू 4,800 पीपल है सब्सक्राइबर्स पता नहीं यार उन्होंने बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाया कि नहीं यस आई हैड टू पुश इट अ लिटिल बिट but hopefully we'll have even we have I think Vedant joining us in some time so let me just check the message आने वाले कुछ ही देर में आने वाले बट there's a lot going on और हम आएंगे उस पर फुटबॉल क्रीक्स थैंक यू यार शेयर करने के लिए हाँ मैं तो ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ एंड आई विल बी कवरिंग दैट एज वेल but again I know that as fans we all get so fascinated by transfers or transfers is something हमारी life almost like let's be real matches and tournaments और clubs बनते हैं transfers से नहीं they kind of are made by फुटबॉल खेला जाता है और there's a European Super Cup being played और I think मेरे ख्याल से I don't know it's just the way that football fans or sports fans we think like in my opinion that is a much bigger thing than transfer and so on and so forth लेकिन हम obviously transfers के बारे में आएंगे we will cover it as always like we do हाला मैड्रिड बोल रहे शाम नाइस टू सी यू बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं बट अगेन लाइक ऑलवेज से हम कवर करते हैं न्यूज एंड टू एंड सो everyone who's here thanks a lot for coming on और हम इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू चेल्सी आई मस्ट से यहाँ पर चेल्सी का भी डाल दूंगा बारसा की बात हम करेंगे ला लीगा की बारे में बात करेंगे यस टुडे इज गोइंग टू बी नॉट जस्ट अ प्रीव्यू फॉर द सुपर कप बट ट्रांसफर स्टोरीज तो है ही बट इवन ला लीगा काइंड ऑफ व्यू पॉइंट फ्रॉम अ रियल मैड्रिड पर्सपेक्टिव वन आवर्स इन द हाउस मुझे बिग अप आपको भी प्रताप इन द हाउस थैंक यू फॉर जॉइनिंग टॉक एमयू इन द हाउस थैंक्स फॉर जॉइनिंग ब्रो एज ऑलवेज निखिल शाउट आउट बनता है अरे नितेश थैंक्स भाई क्या ही तो बोलूं ना कराए फॉर अ चेंज कोई नहीं संजीव इन द हाउस यस थैंक्स एज वेल एंड कोई नहीं यार ट्रांसफर आपने बहुत जल्दी कर लिया था रियल मैड्रिड को और उस पर आएंगे इसीलिए हम ला रहे हैं वेदांत को आज पैनल में सो दैट वी विल गेट अ मैड्रिड पर्सपेक्टिव एज वेल लेकिन भाई सबसे पहले अगेन इट इज द यूएफा सुपर कप तो यूएफा सुपर कप भाई एज अ चेल्सी फैन फॉर मी यार मुझे तो यही याद आ रहा है और समथिंग दैट आई कैन रिलेट टू आप लोग पता नहीं रिलेट करोगे कि नहीं एंड यस ऑफ कोर्स पीपल बनने वाले रास्ते बिकॉज देयर इज अ लॉट टू डिस्कस आज ठीक है ये देखिए दिस इज व्हाट आई रिमेंबर एनीवन रिमेंबर दिस last year yes this time Kepa had become a hero at Belfast at in and I think it was in Ireland if I'm not wrong Belfast Northern Ireland yeah लेकिन whatever it is भाई it was a penalty shootout it was Chelsea against Villarreal और हमने जीत लिया था आफ्टर 1-1 इन एक्स्ट्रा टाइम तो यार दैट वाज अ मोमेंट तो अगेन जस्ट काइंड ऑफ फील्स वियर्ड सुपर कप होल्डर्स और हमारा जाने वाला है हाथ से सुपर कप तो इसलिए दिखाना बनता ही था भाई चेल्सी फैंस हो जाए यार मतलब दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कप क्योंकि हमने और क्यों रिलेटेड है रियल मैड्रिड से रिलेटेड है वो मैं आता हूँ उस पर डेफिनेटली उस पर भी आऊंगा लेकिन यार ये अगेन रियल मैड्रिड एंड फ्रैंकफर्ट एज वेल यार ऑल द बेस्ट ये हम देने वाले हैं इट्स लुक्स लाइक ऑब्वियसली वन ऑफ देम इज गोइंग टू टेक इट प्रीटी श्योर और प्रेडिक्शंस पर आएंगे प्रीटी श्योर कौन लेने वाला है देयर इज नो सीक्रेट्स देयर बट एनीवे come on let's see and yes दिव्यांशु मैं स्टार करके रखा हूँ like I said हम ट्रांसफर न्यूज पाएंगे because what is it is basically it was meant to be a UEFA Super Cup preview plus transfer stories plus La Liga predictions ठीक है so this is what the stream is all about तो यार the people who will rewatch will be rewatching thinking that okay there will be a lot of information about the UEFA Super Cup and that is why हम वहां से शुरू कर रहे हैं but we'll definitely come to transfers and so on and so forth as हम करने वाले big up दिव्यांशु आपको वेदांत को भी yes बिल्कुल एंड संजीव इज अ बारसा फैन नाइस ओके दिशांत इन द हाउस भाई अगेन ऑलवेज गुड टू सी दिशांत यहाँ पर एंड ओके काफी लोग बोल रहे हैं चेल्सी विल मिस केपा इन पेनल्टी शूटिंग लेट्स सी भाई उस पर क्या होता है भाई शायद को भी यार ऑलमाइटी कोच इन द हाउस थैंक्स फॉर जॉइनिंग एज ऑलवेज भाई सब लोग जो भी लोग ज्वाइन किए थैंक यू इनफ लेट्स लाइक द स्ट्रीम एंड लेट्स शेयर इट पॉसिबल
so that we have more people. यार ज़्यादा डिस्कशन होगा तो बेटर है. और वैसे ही हम ऐड कर रहे हैं वेदांत को. वेदांत इज हियर. वेदांत क्या हाल है भाई? ऑल गुड अंकित भैया, आप कैसे हो? मस्त मस्त एज ऑलवेज. एंड ऑफ कोर्स मैं वही अभी दिखा रहा था, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, कि बेसिकली थोड़ा सा दुख लग रहा है भाई. चेल्सी सुपर कप होल्डर्स, वी गोइंग टू लूज आवर सुपर कप इन 24 आवर्स. तो दैट इज द पॉइंट. बट ऑफ कोर्स यू नो क्रेजी ट्रांसफर न्यूज, हम उस पर भी आएंगे वेदांत. एब्सोल्युटली यस पीपल आउट देयर जो भी यार जिनको नहीं पता है मैड्रिड पंडित, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू देम एज वेल, नॉट जस्ट हमारे दोनों चैनल. लॉन्ग टाइम अंकित भाई, लॉन्ग टाइम मिले नहीं अपन. Yeah, I know. But यार Vedant was injured, so you know big up यार Vedant को आने के लिए. I know that he's not 100% as well, but again हम 3 गोल मारेंगे फ्रैंकफर्ट को. चलो देखते हैं भाई. There is a lot of history to it. और पता नहीं यार, आपको पता ही नहीं वेदांत, रियल मैड्रिड और चेल्सी कनेक्शन है यहाँ पर. तो रियल मैड्रिड ऑब्वियसली यहाँ पर, आई थिंक इफ आई नॉट रॉन्ग, दे आर टारगेटिंग देयर रिकॉर्ड इक्वलिंग 5th यूएफा सुपर कप. ठीक है, उन्होंने 4 जीता है. एंड आई थिंक इट्स द 8th अपीयरेंस. Does anyone in the chat knows first of all कि which are the 2 clubs which have more appearances than Real Madrid in the Super Cup? Chelsea. बता दीजिए. Anyone? वेदांत आपको पता है? Chelsea and Bayern Munich. Good guess. I hope Chelsea and Bayern Munich होते हैं, लेकिन दोनों ही गलत है actually. Anyone who has more appearances in the UEFA Super Cup than Real Madrid? There are 2 clubs. हाँ, एक मैं हिंट देता हूँ. One of the clubs I also support. हाँ? AC Milan and Barca. Yeah, correct. AC Milan and Barca it is. 9. Yes, AC Milan people don't know why, they are definitely there in the history, right? But you know what? मतलब Frankfurt is not easy. यार सबको याद होगा Frankfurt eliminated what? Barcelona last time in the quarterfinals in the Europa League, or that was something. तो यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ यार क्या होने वाला है. ये बाय द वे फिनलैंड में हेल्सिंकी स्टेडियम में. और बिग अप टू माइकल यार, माइकल टॉक फुटबॉल, ही इज एक्चुअली गोइंग टू बी इन द स्टेडियम. तो लेट्स सी इफ वी कैन गेट सम लाइव शॉट्स एज वेल जब हम वॉच अलोंग करेंगे. लेकिन भाई दिस इज व्हाट यार, आर यू एक्सपेक्टिंग हेल्सिंकी टू बिकम लाइक दिस? वेदांत, इज दिस देयर ओनली थ्रेट प्रोबेबली? I don't think so. The fans would be a problem for Real Madrid. I mean, I do know कि Frankfurt fans, especially जो भी German fans हैं, how hostile environment they create. मतलब हम सब जानते हैं बारसा में न्यू कैंप में उन लोगों ने क्या करा था. But I feel that this Madrid team is very very experienced. I think core players तो सारे खेलने वाले हैं. Kroos, Casemiro, Modric, Benzema, सारे काफी experienced players हैं. Alaba, Rudiger, etc. Carvajal. So we have an experienced team. जो टीम बारसा के खिलाफ खेली थी, that was with due respect to those players, they were inexperienced. Pedri, great player, great midfielder, but still, he's just 19. Gavi and Nico and Ansu Fati and whatever the amount of options they had back then, I think if I'm not wrong, Abde also played in that game. And उस टाइम हम सब जानते हैं बारसा को क्या problems हो रही थी in terms of performances on the pitch, off the pitch. But now they've got a strong team. But when it comes to Real Madrid, I think Madrid should take this. But I'm not saying कि it will be a cakewalk for us. हाँ, Kostic वो लोग हार चुके हैं to Juventus. But I don't think it's going to be a cakewalk for us because, you know, if someone like a Rafael Santos Borré and their other right winger or a right forward who plays now, Lindstrom, yeah, that's his name. अगर वो लोग मिलिटाओ के सामने 1v1 कर जाता है ना, and अगर मिलिटाओ के पास बॉल एंड फ्रैंकफर्ट प्रेस करती है, then we are in trouble. We're in deep trouble because Militao of lately has been very very poor. Firstly, secondly, he is not a press resistant defender, which Alaba is or Rudiger is for that matter. You know, both are very calm and composed on the ball. So Alaba and Rudiger would be my starting centre back pairing. You know, because we need ball playing centre backs against a team which presses really really very well. I was just going through some of their stats, and you know, Rafael Santos Borré and Lindstrom, जो भी नाम है उस प्लेयर का यार, it's too tough to pronounce. What they do is गलत प्रोनाउंसिएशन मत कर लेना, कुछ और ही मतलब निकल आएगा. हाँ, what they do is ना that उनका प्रेस एक डिफेंसिव माइंडेड प्रेस होता है, बट उनके प्रेसिंग स्टार्ट्स आर अमेजिंग. 25 pressures per 90, 26 pressures per 90 and 99% successful rate. Now I'm not saying that if you're a pressing team you'll definitely know something. Madrid La Liga में 16th team है in terms of pressures, successful pressures. That's not what I'm trying to say. But what I'm trying to say here is कि Frankfurt एक बहुत excessive pressing team है और एक ऐसी team है जो organized है when it comes to pressing. So that can be a problem for Real Madrid. Kroos, Casemiro, Modric have to start because obviously all the three bunch are a press resistant midfield trio. Apart from that, I feel that Valverde has to play, but it's a very very good news कि Kostic, जो उनका main creativity source है, वो अब Juventus में है, so he's not going to play this game. It will be a big up. I feel कि कहीं ना कहीं उनकी
the thought process of that team would be elsewhere because their best player has left them just before a crucial game. अगर यूवेंटस वाली डील एक दो दिन बाद हो जाती तो that would have been better, irrespective of the result जो भी होता आज. But कहीं ना कहीं their team mentality would also be not be upright because they've lost their best player to Juventus. बिल्कुल बिल्कुल अगेन मतलब बहुत अच्छे से समराइज किया है वेदांत ने. ऑफ कोर्स विल कम टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट वन बाय वन एज वेल इन डिटेल. लेकिन हाँ मतलब एक होता है टीम, व्हाट इज द ऑपोजिशन. अब ऑपोजिशन देखो तो फ्रैंकफर्ट यार, फ्रेंडलीज तो बहुत अच्छे किया था फ्रैंकफर्ट ने. लेकिन वही है, व्हेन इट स्टार्टेड आई थिंक डीएफबी पोकाल का एक मैच हुआ था. अगेन इट इज They नॉट lost अ to Bayern टॉप टीम. 6-1, but I'm not 1-6 basing एग्जैक्टली. their तो वहां game पर against इट्स नॉट जस्ट us 1-6. आई game थिंक on it. आप अगर कॉस्टिच को देखे भी थे ना, द फैक्ट इज कॉस्टिच, हाँ ही माइट नॉट हैव टेक्निकली गॉन येट टू यूवेंटस, मतलब ऑफिशियली वो हुआ नहीं इन टर्म्स ऑफ द Announcement नहीं हुआ है. मूवमेंट. लेकिन इवन प्लेइंग हिम इज सो रिस्की बिकॉज वीकेंड में क्लियर था दैट ही वाजंट अप टू द मार्क. और इसलिए हो सकता है नाउफ माइट प्ले ऑन द अदर विंग. दैट इज क्वाइट पॉसिबल. आई थिंक उनके मतलब एज आई थिंक वेदांत सेड दैट बोरे इज वन. लेकिन समथिंग अबाउट जर्मन क्लब्स. अब देखो वही है, मैं हिस्ट्री में थोड़ा सा बिलीव करता हूँ इन टर्म्स ऑफ दीज नॉकआउट कॉम्पिटिशंस. मतलब इसलिए मैं आ रहा हूँ वापस चेल्सी पे. Chelsea was the very first team who eliminated Real Madrid in the UEFA Super Cup. Obviously, we won it in 1998. वो अपना था first Super Cup, right? लेकिन उसके बाद I think they lost the next one to Galatasaray. फिर next में 3-4 शायद जीते, back to back 4 जीते थे, right? And then recently Atletico Madrid के साथ हारे Atletico थे. Madrid, oh God, please मुझे वो गेम याद 4-2. मत दिलाओ. Right, 4-2 I था if I'm hate not that wrong. game, भाई. राइट. लेकिन जर्मन क्लब्स का कुछ है यार. आई डोंट नो अबाउट यूरोप. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग फ्रैंकफर्ट विल बी लाइक द 7th और 8th पोटेंशियल टीम जो मीट कर रही है रियल मैड्रिड को इन यूरोपियन कंपटीशन नॉकआउट्स. एंड काफी बार रियल मैड्रिड ने हार का सामना किया है. तो आई थिंक देयर इज नॉट एवरीथिंग दैट आप इट्स अ गिवन बिकॉज यस on paper is any day anyone say but Real Madrid are favorites. There's no two ways about it. Lekin again coming to the team, I think Bore is the X factor. Lekin again German Godse, I know he's past his prime big time, but don't you think Vedant, like these are such nights where वहां पर experience really counts. So if in case the idea of जैसे विलारियल की थी चेल्सी के साथ last season, right? तो they just kept us at bay और फिर एक गोल मार दिया, फिर एक और गोल मार दिया, फिर they went to penalty. So that might be the tactic of Frankfurt. So you never know with a Godse being there. Do you see that kind of creativity is there? You said about press, but that kind of creativity in passing be there. Maybe for that reason, Alaba might play centre half, and that is the reason why he might be preferred as centre half. See, Alaba is any day going to play at centre back with any team, be it a team which plays low block or is a very excessive pressing team or a high line, whatever. Alaba is a starter centre back. Now the other position at the right centre half is my question: who do you play, Rudiger or Militao? Now the problem with Alaba and Rudiger is that they've got similar traits. They're ball playing centre backs. They're ball progressive centre backs. Militao is not a ball progressive centre back. I feel he's not that good with the ball like how Alaba and Rudiger are. So my problem is that will Alaba and Rudiger have that connection? कि अब तू अगर आगे जा रहा है तो मैं पीछे हूँ, तू पीछे जा रहा है तो तू आगे जा रहा है तो मैं पीछे हूँ, वैसा will they have that understanding? Because Alaba and Rudiger have not played together yet. So would Ancelotti be willing to take that risk, or would he go with Militao? That's my question. Yeah, I think आपकी Because preferred lineup है. यार मतलब मैं प्रिफर्ड लाइनअप, मतलब मैं तो आई हैव जस्ट गॉन बाय प्री सीजन बिकॉज व्हाट आई सॉ अगेंस्ट बारसा वाज प्रॉब्ली द गेम जहां पर एक्सपेरिमेंट सोच रहा था. लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग रूडिगर as much as Araujo did much better in that particular moment, लेकिन overall Rudiger did very well in my opinion despite him Lala playing Junior, let me please answer Lala Junior. See, yeah please. आप एक बार वो क्वेश्चन एक बार दिखा दो ना. Here he has mentioned that Militao के shots better than VVD से. यार आपको देखना पड़ेगा कि लिवरपूल कितने शॉट्स अलाउ करती है गोल में, लिवरपूल के पास कितना पोजेशन था बॉल का, एंड मैड्रिड कितने शॉट्स अलाउ कर रही थी, एंड मैड्रिड के पास कितना % ऑफ द बॉल था. इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपके डिफेंडर कैसे परफॉर्म करेंगे बेस्ड ऑन देयर सिस्टम्स. मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अभी रूबन डियास के स्टैट्स वर नॉट एज गुड एज मक्वायर्स स्टैट्स in 2021, but that does not mean कि Maguire was a better center back than Ruben Dias. Similar case यहाँ पे. I don't think देखो, I'm not questioning Eder Militao as a player or a defender. I'm just questioning him going by what I've seen in the preseason. Yes, preseason does not give you the entire story altogether. I know that. But एक question mark तो उठता है ना, because Eder Militao is not an experienced center half like Rudiger or Alaba.
या फेयर इनफ. चलो ये एनीवे आई एम जस्ट गोइंग बाय जो प्री सीजन में हुआ है. और टॉकिंग अबाउट प्री सीजन भाई, माइट बी दैट्स अ फैक्टर. हाँ, डेफिनेटली फ्रैंकफर्ट हारी है. दे आर लूजिंग कॉस्टिच. दे माइट नॉट रिस्क कॉस्टिच इस गेम के लिए. आई थिंक नाउफ खेलेगा. नाउफ हैड अ ब्रिलियंट अपीयरेंस वर्सेस वाज इट बार्सिलोना, राइट. और वो इसलिए मैं रूडिगर को लेफ्ट बैक रखा हूं क्योंकि रियल मैड्रिड का 3 ही मैच खेली है शायद. एक हारी है, एक जीती है और एक ड्रॉ हुआ है प्री सीजन में, करेक्ट. हाँ, यही हुआ है. या और वर्सेस फ्रैंकफर्ट, डिस्पाइट लूजिंग रीसेंट मैच, वो काफी सारे मैचेस खेले. दे आर मोर फिटर, दे आर मोर रेडी. एज इन डोंट यू थिंक दैट विल बी अ मेजर एलिमेंट? एंचेलोटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही स्पेसिफाई किया दैट द ओनली एडवांटेज फ्रैंकफर्ट हैज ओवर अस इज गेम फिटनेस, मैच फिटनेस. They've played Bayern, although they've lost pretty badly. मतलब gang bang हो गया उनका तो. But they've still played more games than us. That's a factor. But एक चीज जो Kostic के बारे में है ना भैया, Kostic is very fundamental in terms of their transition play, in their build up. अगर आप देखें तो let's just start with their basic build up. जब उनके गोलकीपर के पास बॉल होती है, उनके तीनों सेंटर बैक्स बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, चिपके पड़े रहते हैं एक दूसरे से वो. और उनके विंग बैक स्टक इन करते हैं फॉर्मिंग अ बैक फाइव. बट एज देयर गेम प्रोग्रेसेस ना, उनके विंग बैक्स अटैकिंग हो जाते हैं एंड इट फॉर्म्स अ 3-2-5 विद देयर टू, आई थिंक क्या नाम है, सो करके, SOWE नाम है, और दूसरे का रोडे नाम है. ये दो इनके मिडफील्डर्स हैं जो कि डीप. नहीं, एक्चुअली I really feel that Kamada will play. I really feel Kamada will play. Kamada is awesome. Kamada is going to play. Yeah, Kamada midfield में खेलेगा. मिडफील्ड में खेलेगा. मिडफील्ड में खेलेगा कमाड़ा लेफ्ट, क्योंकि यार ही हैड, आई थिंक डीएफबी पोकाल का गेम था. इफ यू एक्चुअली वॉच द हाईलाइट, दिस गाय रूल्ड द गेम इनसाइड आउट. तो आई थिंक वो मिडफील्ड में खेल सकता है. और वही है मतलब, हाँ, क्योंकि कॉस्टिच नहीं है, यू माइट से दैट ही माइट प्ले वहां पर, लेकिन इन माय ओपिनियन उसका बेस्ट पोजीशन इज इन मिडफील्ड. ही एक्चुअली रियली प्रेसिंग जो बोल रहे हो ना, ही इज एक्चुअली दैट गाय फॉर यू जो करेगा, इन माय ओपिनियन. यस, But I feel that Kamada Kostic ही जगह लेगा, because Kostic is not going to play this game ना. इसका Juventus move है. ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट फब्रिजियो ने कह दिया तो मतलब हो ही गया ना एक तरीके से. हाँ, in case you're right, exactly. Frankfurt has played 2 more games where Madrid winning easily. And yes, बिल्कुल सही यार. देवेश अगेन जो भी आ रहे हैं भाई, सब साथ में लाइक कर लीजिए. Do not forget to like the stream and of course subscribe अगर आपने नहीं किया है. Like you see, we are very close to 5k. Let's get us there. And of course Madrid Pundits, if I'm not wrong, they are very close to 4k. So let's get them there as well. And yes, Zishan, उस पर तो मेजर बात करनी है. We'll come to that. We are first starting off with this preview and then we are doing transfers. और हम लालिगा के बात भी करेंगे definitely. So if you can have more people, और मजा आएगा. I am starring some questions so that हम last में ले regarding transfers and other topics, right? Do you think Madrid squad is good enough to challenge for UCL and Barca for La Liga? Again, La Liga पर तो आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन generally speaking, right? Madrid squad, are you satisfied with the transfers of Madrid as of now? I've got a mixed opinion, to be very honest, on this. But more or less, I'd say that Madrid has made great signings. I feel Tchouaméni and Rudiger's addition to the team is really good. We've lost Marcelo, Isco, and Bale, but those guys weren't really that important last season for us. With due respect to those players, I feel that हमने हमारी squad ना थोड़ा सा और खींचा है, to be honest, because हमने, no disrespect to those players, but कहीं ना कहीं deadwood ही थे ना हमारे लिए वो पिछले साल. We didn't use those 3 players too much. Correct. We've kind of eased out our wage bill because these 3 players were earning a good chunk, especially Marcelo and Bale. We've let them go and we've gotten Tchouaméni and Rudiger. So these 2 players are expected to get a tremendous amount of game time. So that's my thing. You've added 2 more players to your squad. That's what I feel, rather than losing 3 players. That's what my take is. But you also need to look at the circumstances which Barcelona went through and through which Madrid went through. I think that's something which is constantly, not being looked at. I know Barca has also, signed Bernardo Silva, which kind of means that they're going to lose Frenkie de Jong to Chelsea or to Manchester United. But about this, I'd say that I think we've got enough amount of options at right wing. Rodrigo is there, Valverde is there. We've got Asensio, who's a decent squad player. So 3 great options at right wing, I feel. But about striker, I would want Madrid still to go for a backup striker. If it does not happen in the summer transfer market, I'm pretty sure we're going to get it in the winter transfer market. Okay, मतलब वही, it depends on Hazard how he does as well, क्योंकि यार अभी के लिए तो he's. I feel Carlo Ancelotti is taking a gamble with Eden Hazard. I feel that he's trusting Hazard a lot, because he's much fitter. He's dribbling past players in the training, but obviously that's in the training. But he's still doing that. He's looking more confident on the ball.
So he has that, expectation that we'll get at least a good 40% of the Hazard we saw in Chelsea. That's what he's thinking. मतलब He's वही है ना पॉइंट. अब देखो, इफ हजार्ड ही वाज प्लेड एट बेसिकली एज अ बैकअप टू विनीशियस जूनियर और मे बी एज अ स्टार्टर एज राइट विंगर, इन माय ओपिनियन वो बहुत ही ज्यादा रिस्क हो जाता, इनफैक्ट ज्यादा रिस्क होता है इससे, बिकॉज the fact that he's coming back from so many injuries, right? So in my opinion it's better to keep him as a backup to Benzema, or of course in between games I'm pretty sure वो drift करेगा, और वो natural है भाई. Hazard he'll obviously drift. Talking about tactics, यहाँ definitely Rudiger का मैंने देखा है comment, और वही मैं बोल रहा था ना, फॉर मी जब मैंने कवर किया था इन टर्म्स ऑफ रिव्यू आफ्टर द एल क्लासिको, राइट, इट वाज अ बिगेस्ट सरप्राइज दैट रुडिगर वाज प्लेड एज लेफ्ट बैक. लेकिन आफ्टर सीइंग हिज परफॉर्मेंस, आई थिंक वही इन गेम मैनेजमेंट एक होता है, तो इन गेम मैनेजमेंट आई थिंक रुडिगर कैन बी दैट गाय फॉर स्पेसिफिक गेम्स टू प्ले दैट रोल. लेकिन डेफिनेटली आई अग्री दैट ही हैज टू बी पार्टनरिंग अलावा. आई गो विद, मतलब वेदांत के साथ जा रहा हूं मैं. आई जस्ट पिक दैट टीम जो मैंने दिखाया था बेस्ड ऑन जो कार्लो एंचेलोटी हैड पिक्ड फॉर दैट गेम, एंड ऑफ कोर्स द परफॉर्मेंस, Barca. नथिंग एल्स, राइट. बिल्कुल. विनीशियस वर्सेस डेम्बेले, हु इज बेटर? यार मुझे पूछो तो आई वुड हैव पिक्ड विनीशियस बिकॉज ऑफ, मतलब एक साल तक दिखा है वैसे, लास्ट एक साल में कंसिस्टेंट दिखा है. डेम्बेले हैज शोन फॉर लास्ट 6 months, बट अगेन बोथ आर ग्रेट यार, एब्सोल्युटली. देखते हैं. आई एम गेटिंग टेंस्ड अबाउट सिल्वा, क्योंकि हर एक अटैकिंग पोजीशन में, चलो आते हैं भाई, हम आएंगे, बहुत सारे मेरी तो ट्रांसफर्स पर फट आएंगे. गई, मैंने पढ़ा ना वो गया बारसा, मेरी फट गई, वही फट गई मेरी. मैंने बोला फिर अब मैड्रिड क्या कर रही है, तब मैंने बिल्कुल सोचा. बिल्कुल बिल्कुल. तो पीपल यार, कम ऑन, लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइंड, होपफुली एवरीवन इज लाइक्ड, एंड यार सब लोग बताइए स्कोर क्या होने वाला है, बिकॉज आई थिंक एक चीज मैं बताता हूँ यार, एज मच एज आप बोलोगे फ्रैंकफर्ट पिट जाएगी एंड ऑल दो 6-1 हारी है बायर्न म्यूनिख के साथ, लेकिन आई थिंक कपल ऑफ पॉइंट्स मैंने बताया, एक होता है दैट क्राउड, ठीक है, डिपेंड्स कि कितने लोग जा रहे हैं. लेकिन वही है, someone told me that it's white and black, which is kind of similar to Madrid, so it can work in Madrid's favor also. लेकिन the second point that I said is about Mario Götze and how he's used in the in those minutes. लेकिन एक और उनका जो बोरे तो है ही है, लेकिन उनका गोलकीपर यार, आई थिंक केविन ट्रैप इज वन ऑफ द मोस्ट अनरेटेड गोलकीपर्स, आई जेन्युइनली बिलीव दैट. तो ही इज एक्चुअली Yeah. अ वेरी गुड गोलकीपर. तो वही है, द गेम प्ले विल बी यार प्रेसिंग, और अगर गोल कंसीड भी करते तो लीस्ट नंबर ऑफ गोल्स एंड देन हिट ऑन द ब्रेक, और दैट हैज टू बी द टैक्टिक ऑफ फ्रैंकफर्ट. तो वहां पर जो विलारियल की थी That लास्ट is सीजन their विद gameplay, चेल्सी. Ankit bhai. That is their gameplay. That's what they do. They play 3-5, यस, press and counter press. That's their game plan. बिल्कुल. That's always been them. राइट. I also feel that Frankfurt is a cup team. Like, no disrespect to them, but going by their league finishes of lately, I feel that they're better in cup competitions rather than league, because I feel that they या. don't do what they can consistently and perform on एंड moments. yeah, absolutely. और प्लस वो at the end of the day, like Villarreal, it is their first Super Cup. तो यार they'll be pumped up. Leave Kostic, लेकिन बाकी लोग तो they'll be pumped up, and the manager is really good. Having said that, I think German clubs के, sorry, Spanish clubs के साथ उनका अच्छा रहा अच्छा. है in terms of the head to heads. So there is something out there. मतलब एक confidence booster होगा. Pretty sure these are things that the manager will talk to them. But at the end of the day, it's Real Madrid. And यहाँ पर एक question आया था कि Real Madrid, do you think they will experiment and play the youngsters in midfield? मतलब why would they experiment at this point, no? This is not your experimental game, to be honest. Experimental games वो होंगे जो अभी हो चुके हैं and जो आने वाले हैं ला लीगा में. Starting game weeks में we've got easy games. I think if we are playing Almeria and some other players. So that's that. And Sanjeev, thanks यार, मेरा leg better है. I read your comment, for wishing me and all. So really thanks a lot. Young midfielders की बात करूँ तो यार, there's this one question which I had. Probably अब Casemiro को switch मारो for Chouameni, but Chouameni has not settled in the side so far. So that's also a very big question. I feel you go with what works, and Ancelotti has said it numerous times that he's going to play the same team which played in the Champions League final, because he thinks that they deserve to play the same game. And a spot at Real Madrid starting 11 needs to be earned. चाहे आपकी जितनी भी fee रही है, you need to earn your spot. बिल्कुल बिल्कुल. अरे हाँ यार, मतलब मैंने मतलब मैच तो नहीं देखा था दिशांत, लेकिन आई वॉच द हाइलाइट्स ऑफ इट मैन, एज इन इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग बुंडेसलीगा इन माय ओपिनियन. मतलब काफी प्लेयर्स हैं, नॉट टीम्स जो बायर्न म्यूनिख डोमिनेट करेगी, लेकिन जनरली देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स आउट देयर टू वॉच इन द बुंडेसलीगा. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. Ancelotti already said he will play the team that played the Champions League final. Exactly. So I think Ankit bhaiya, sorry to cut you. We're saying that they've lost Kostic, but we also need to look at the fact that they've got this one player from AC Milan. His name is Jens Peter Hoj, something like that. Mhm, He's mhm. a youngster, and he plays at the exact same position which
Kostic does. So I feel that's a direct, switch. Yeah, I मतलब think वही they है, मैं knew बोल रहा that हूँ they ना, were going to lose Kamada Kostic in the again. league. Michael is there. I remember Michael last season we discussed a lot about the Europa League and stuff like that. Michael, I did give you a shout out in the beginning of the stream. Not sure if you heard it. Yes, Michael is actually going to be at the stadium. I know that as a fact, and hopefully, Michael, you share us a lot more insights tomorrow. But enjoy the game. Definitely, it's one of them. As in, it's a European night after all, right? It'll be crazy. Pretty sure the atmosphere will be great. But I think, yeah, Kamada for me is still that guy who's going to be the main guy in midfield, in my opinion. That is what a Frankfurt बेस्ट करेगी अगर वो कमाडा को मिडफील्ड में खिलाते हैं. हेलो एज वेल, बेंजेमा स्कोर विनर एंड डॉन कार्लो विल रेज हिज आईब्रोज. वो तो प्रीटी मच श्योर यार, पहले ही रेज आईब्रोज तो हो जाएंगे पहले ही. नो प्रॉब्लम. एसीएम इज स्टिल अ गोटेड मिडफील्ड, बिल्कुल. Yeah, absolutely. And yes, people, again, not forget to like, share and subscribe. चलो फिर थोड़ा सा अभी हो जाते हैं. फर्स्टली ट्रांसफर्स पर आते हैं, देन विल कम बैक टू ला लीगा एंड यूसीएल प्रेडिक्शंस फ्रॉम अ रियल मैड्रिड पर्सपेक्टिव. ठीक है. Come on, man. Crazy news, obviously, for people out there जो by chance busy थे आज, जो भी हुआ है. Yes, जेरार्ड रोमेरो ने बोल दिया है, जो वो जब बोलते हैं things happen. And as per reports, what 50 to 55 million euros, Bernardo Silva. लेकिन again there are mixed reports. There are saying that okay, it's been decided, it's been agreed upon by Bernardo Silva, not Man City yet. By लेकिन Man City. हमें पता है पेप ग्वार्डियोला क्लियरली सेड कि अगर बर्नार्डो सिल्वा जाना चाहते, he will वो not just come in between. So looks like that actually might happen, but not just that. Crazy news यहाँ भी आई है about Frenkie de Jong, that Frenkie de Jong, as much as basically he wants to stay in Barca, he knows that his future is probably at Chelsea, or Chelsea are ready to pay anything for Frenkie de Jong. So there are like यहाँ domino जो हो रहा है ना, मतलब how does a Real Madrid fan feel right now? Because यार Bernardo Silva आ जाता है, trust me, Barcelona is back to the very very top, मतलब at least on paper. I know questionable as to how etc, कितने रजिस्टर होंगे, वो सब पे बात कर सकते हैं अपन. नहीं, डेफिनेटली रजिस्टर सब हो जाएंगे. अल्टीमेटली रजिस्टर सब हो जाएंगे उनके. कर लेंगे अब. वो पता नहीं क्या लिवर किडनी खींचता है, मुझे समझ नहीं आता, बट उनके रजिस्टर हो जाएंगे. Because the thing with them is that they're selling off their all financial assets which they've got. They're selling players also. फ्रैंकी de Jong की सेल करते हैं तो यार बर्नार्डो सिल्वा के लिए डायरेक्ट पैसा आ जाएगा उनके पास. If I'm not mistaken, फ्रैंकी de Jong को they're valuing at 65-70 million. तो अगर आप लोग उनको 70 million दे देते हो तो एटलीस्ट बर्नार्डो सिल्वा को तो आराम से वो लोग निकाल लेंगे पैसा. एंड जब बात आती है और प्लेयर्स को बेचने के लिए, they need to free up 30 million or something. So that's the amount they can easily find by selling off their financial assets. Exactly, मतलब they are still having a lot of players on the books, तो ऐसा नहीं है कि यार they have to get rid of only This Frenkie. is fake news. This is fake news. या फेक न्यूज. और एक और चीज यार, गावी को एक्चुअली हेल्प होगा यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट. गावी, पेड्री लास्ट 2 सीजंस में दे हैव प्लेड क्रेजी नंबर ऑफ मिनट्स, तो उनको तो इट विल बी हेल्पफुल. प्लस यार इफ बेसिकली बर्नार्डो सिल्वा इज कमिंग, आई थिंक दैट्स अ प्रॉपर मेंटर, एज इन द आइडियल मेंटर इन वर्ल्ड फुटबॉल आज के दिन में है फॉर गावी एंड पेड्री. इट विल बी बर्नार्डो सिल्वा, simply foot. Okay, he's your what, left footer as well. तो pretty sure. लेकिन यार यहाँ पर मैन सिटी का क्या होगा यार? मैन सिटी अगेन रिपोर्ट सेइंग दैट लुकास पकेटा है, they are also interested in other players as well, लेकिन I don't think वो रिप्लेस कर पाएंगे. हाँ, at best they will take in the squad, और गुंडोगन उनका स्टार्टर रहेगा. मतलब that is what हमने देखा था वीकेंड में, और they look really but good. But Gundogan isn't your like ideal replacement for Bernardo Silva. Na? They're different profiles. हाँ, एग्जैक्टली. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि आई डोंट थिंक किसी को लेंगे considering that it's an ideal replacement. They'll probably get someone for the squad, or someone who doesn't start much as well. Yes, of course, Aditya. Hello, and West. Barca potential level for this season after all these signings. अरे भाई, मतलब क्या ही बोलूं यार, मतलब pretty sure. अच्छा, फ्रेंकी की थोड़ा बात कर लेते हैं. चलो फ्रेंकी का बात कर लेते हैं आगे. अभी जावी ने खेला है उसको सेंटर बैक में काफी, राइट? लेकिन क्लियरली वो बहाना था कि यार तू चल जा. हमने बेसिकली लास्ट 2 दिन में न्यूज सुना है अबाउट दोस लीगल इश्यूज दैट देव हैड. दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ लीगल इश्यू जहां पर दे काइंड ऑफ सू बोथ टर स्टेगन का कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज बेसिकली एज एन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इवन लॉन्गले. तो वहां पर इट्स क्लियर दैट दे जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ हिम बाय हुक और बाय क्रुक. देयर इज नो सीक्रेट वहां पर. लेकिन फ्रेंकी कमिंग टू चेल्सी, अगेन फ्रॉम चेल्सी पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ यहाँ पर, और मैंने एक स्ट्रीम किया था अबाउट अगर फ्रेंकी आ जाता है, वी ऑलरेडी हैव अ कांटे, वी ऑलरेडी हैव अ कोविचिच, वी हैव जॉर्जिनियो, एंड ऑफ कोर्स गैलेगर जो आए हैं, ही विल एक्सपेक्ट सम मिनट्स एज वेल नाउ. तो
pretty sure the only reason why Frankie का news आ रहा है कि यार we are ready to pay anything and everything, एक तो succession planning होता है because both Jorginho and Kante are I think in the last year of the contract, so that might be one thing. लेकिन it's a World Cup year, knowing Louis van Gaal, Frankie has to play. तो वहां पर my point of view is like that is the best excuse for Tuchel to finally go 4-3-3, which is one of the preferred formations of Tuchel in the past clubs. So I don't know, what do you 4-3-3. think about that? Yeah, because how Chelsea. will we be able to manage three? मतलब Frankie अगर आता है, if you pay like something like what 60-70 million, ठीक है, Frankie अगर आता है, He pretty has to sure he'll play. expect to start. And he has got the quality to start. I mean, no offense to Kante. He's got a good injury record. I mean, नहीं he's यार, been injured कांटे और numerous times. कोवाचिच से better तो नहीं है. मैं Like, तो I will go hard Frankie and de say Jong, I Frankie mean, de Jong is not better than it's Kante and Kovacic. Yeah, I stick by it 100%. okay. It's your I'm a Dutch opinion. I fan, don't bro. want to. I watch him. I I don't. watch every minute of Frenkie de Jong. Trust me on that. And watch every All right. minute of Chelsea. ठीक है, All I'm right. I'm I frankly guess. saying there are certain aspects box to box में I agree. ठीक है, हाँ. and passer also I agree. लेकिन the way that we have a settled midfield in Kante and Kovacic. ठीक है, yes, one is a ball carrier, one is a destroyer. आपको चाहिए एक combination which Frenkie de Jong probably brings. तो he is the best case आप बोलोगे. लेकिन at this point in time when we already have these players, agar if you're playing just double pivot, knowing Tuchel doesn't like X number of changes in the starting 11. He changes a lot generally, लेकिन मुझे नहीं लगता he would start over them, constantly. तो वही है, मतलब he'll rotate. लेकिन is Frenkie going to be okay with rotation? तो मैं बोल रहा हूँ the best way is just play 4-3-3, play a floating middle three with Kante, De Jong and Kovacic or Jorginho. But who's gonna play center back for you all? Koulibaly and Thiago Silva. हाँ, we are anyway going for a center back as well, right? तो center back में जा भी ठीक है. क्या जा रहे हो तो ठीक है. I didn't know that you all are targeting. या we are. अरे फोफाना भी लेंगे. तो as per report यहाँ पर एक और न्यूज आई ना, द फोफाना का the value was about 80 million, लेकिन they have not agreed and we might go up to 90 million as well. So we might go. तो वहां पर क्या होगा, क्लियरली Thiago Silva is not going to play every game, let's be honest, at 37-30, right? तो वहां पर Fofana and Koulibaly will probably play and will Thiago Silva might be coming in, that वो मुझे लग रहा है. अगेन आपको क्या लग रहा है, सब लोग चैट में आप लोग भी बोलिए. एंड यस, यहाँ पर क्विकली आई थिंक मुझे याद दिला, मुझे थैंक्स यार, मैंने बोला था याद दिलाने के लिए यार. एवरीवन जॉइनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर जॉइनिंग. अगेन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम. वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द प्रीव्यू ऑफ द सुपर कप. हम बात कर रहे हैं अभी ट्रांसफर्स की, एंड देन विल कम टू ला लीगा एंड यूसीएल प्रेडिक्शंस एज वेल फ्रॉम अ रियल मैड्रिड पर्सपेक्टिव, राइट, एंड अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव. तो यार मेंबरशिप का ऐसा है ना कि मुझे बताया, शाउट आउट है वन आवर बस को, बिकॉज देयर इज अ डिस्काउंट ऑफर गोइंग ऑन. I didn't know this myself. So there's a discount offer going on. तो आप अगर membership चाहते हो, do check out. And if you really want it, there's basically 50% discount अभी. So do check it out. Or of course there'll be perks as well. Frenkie is versatile. Can't compare to Kante. Actually, yes, can't compare, exactly. Different players. इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, देखो. That's why I had the question. That's why I had the नहीं, question. वेदांत, मेरा सुनो. देखो, Frenkie is your box to box. ठीक है. Kovacic is your ball carrier. ठीक है. And you have Kante as a destroyer. I don't think a midfield could be as better than that. Imagine वो तीनों midfield में खेलते. That's like crazy, man. As in, मतलब that is one of the best midfield. I think that is the only reason मुझे लग रहा है that we go very hard on Frenkie, क्योंकि हमारे burning needs is the center back and the striker ज़्यादा. तो why would you go for Frenkie Left back unless पे you आप change the कुकुरेया system? को खिला दोगे ना? हाँ, 100. Kukurea और Chilwell is a very good cover ना left back में. So they are like proper left backs. They are not left wing backs anyway. Then what will be your front three? Havertz, Sterling and? हाँ, तो फ्रंट थ्री हावर्ड्स, स्टर्लिंग, माउंट, दैट्स व्हाट इज लुकिंग लाइक. लेकिन हमें चाहिए वहां पर सेंटर फॉरवर्ड. हावर्ड्स इज नॉट पुलिंग इट. De Jong इज बेटर देन कांटे, सॉरी, बट ही हैज ही बीन हिमसेल्फ इन लास्ट 2 सीजंस. हाँ, मतलब वही है मानव, आई एग्री विद यू, लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन I would एस्पेक्ट्स. still take Kante all day long in terms of overall career, but I mean, last हाँ, 2 मतलब seasons कांटे इज he's नॉट योर got a lot of पासर. injury इफ यू वांट issues. कांटे टू बी योर नंबर 8, ही इज नॉट योर आइडियल नंबर 8, क्योंकि यार ही गेट्स, मतलब चेल्सी का लास्ट फाइनल थर्ड में जाकर हक देती है ना हम लोग. तो वहीं पर आई थिंक कांटे इज वेरी गुड इन ऑल दोस थिंग, बट लास्ट में he doesn't do the last part very well. That's fair enough. Fofana के लिए इतना पैसा क्यों भाई? Basically he plays 7 matches previous season. Options like यार I don't know man, मतलब नाचो अवेलेबल है क्या? Just asking. नहीं. I don't mind him as well, to be honest. He can play He's central a back. great player. He's a great player, but he's हाँ, too committed to Real Madrid. मतलब उसने, versatile. he's literally sacrificed his,
kind of career to just stay at Real Madrid. Like he doesn't give two shits about playing time. He just wants to stay at Madrid. That बिल्कुल committed he बिल्कुल is. चलो चलो यस FPL स्ट्रीम पे आएंगे मैक लेट्स ट्राई एंड स्टिक टू द टॉपिक्स पीपल बट हाँ विल डेफिनेटली कम टू FPL स्ट्रीम थ्रू द वीक या आई सॉ दैट कमेंट अगेन प्लीज डू नॉट स्पैम फोफाना तो FI फिर प्रीमियर लीग में FI बोलता आप हाईएस्ट लोग स्कोर एंडीका डिफेंडर को टारगेट क्यों नहीं करते? अरे मैं तो बोल रहा हूँ ना इतने सारे प्लेयर्स है मतलब चेल्सी मैं का कल स्काउटिंग का फ्रैंकफर्ट का स्टाइल ऑफ प्ले देख रहा था, उनके गेम प्लेस देख रहा था. एंडीका इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर देयर बिल्डअप. नहीं लेफ्ट नहीं आई थिंक बिल्कुल आपको लेफ्ट सेंटर बैक ही चाहिए ना. मतलब कोई भी चलेगा यार कुलीबाली खेल सकता है ना अभी तो कोई भी चलेगा सेंटर बैक चाहिए जो चाहिए अच्छा खेले अभी बस थोड़ा अडेप्टेबल होता बेटर है लेकिन मैं बोलता हूँ रीजन क्या है कुकुरिया कैन प्ले लेफ्ट सेंटर बैक तो अभी इतना बर्निंग नीड नहीं है लेफ्ट फुटेड का देखो ऐसा है ना चेल्सी ने लास्ट 5-6 सालों में जितने भी साइंस किए ना अपना जो रेशियो रहा है इन टर्म्स ऑफ पीपल हु हैव प्लेड इन इंग्लैंड वर्सेस पीपल हु नॉट प्लेड इन इंग्लैंड बहुत बड़ा वेरिएशन रहा है आई नो थियागो सिल्वा इज एन एक्सेप्शन लेकिन बहुत कम प्लेयर्स आए फ्रॉम अदर लीग्स हु हैव डन वेल यू नो और हमें चाहिए स्टार्टर तो एज अ स्टार्टर बिकॉज एस्पिलिक्वेटा इज अ लेजेंड ही विल ऑलवेज स्टे लेकिन ही एट बेस्ट लाइक अ थियागो सिल्वा विल प्ले एवरी सेकंड गेम ऑन एवरेज ठीक है ही कैन नॉट प्ले एवरी गेम तो वी नीड रोटेशन बिटवीन एस्पी एंड थियागो सिल्वा और एक बंदा स्टार्ट करेगा उसकी जगह तो स्टार्टर के लिए टॉड बली और थॉमस चुकल बात करके डिसाइड किए कि लेट्स गेट समवन हु इज प्रीमियरशिप प्रूवन तो वी आर रेडी टू प्ले यार मैं तो बोलता हूं स्क्रीनियर को ले लो यार बैक थ्री में स्क्रीनियर इज प्रॉब्ली बेटर एट दिस पॉइंट इन टाइम देन फोफाना ठीक है लेकिन वही है वी रादर पे 30 million मोर एंड गेट फोफाना क्योंकि ही इज वन फॉर द फ्यूचर एज वेल और अभी प्रीमियरशिप प्रूवन है दैट्स द मैं एग्री नहीं कर रहा आई गो विद वेदांत लेकिन मतलब दैट्स द रियलिटी ऑफ हाउ इट इज okay, again, Mark, we'll come back to FPL streams later on. Akanji is a very good shout available and trying to get, yeah, बिल्कुल, again, यार, no one is going. मतलब Bundesliga, talk about people coming from Bundesliga, यार, मतलब मुझे तो चेल्सी में याद ही जो आया था एकदम एकदम फाड़ दिया Bundesliga से, you know, Havertz close, but anyway, he's also still building. Generally, मैं बोल रहा हूँ ना. That is also one problem. Anyway, Philip Kostic to UA, yes, if they had Pogba, they could have won the league easily. If they get Paredes, they are still the favorites. Let's see I don't who think they so. get Not midfield. this season. I feel next season they'll be favorites. Juve. I feel you have to do a job in their backline. यार. Just look at अरे their अभी backline. लेकिन ये जा सकता है ना डिपाई might still go. To Juventus. Yeah, But again, ना डिपाई अंकित भैया आप उनकी बैकलाइन देख डनीलो है क्वाड्राडो है बोनुcci है these three players are at least 33 each और वो एक वर्दर ब्रेमेर को लेकर आ गए हैं क्या नाम है उसका ऐसे कुछ नाम है ब्रेमेर फ्रॉम टोरिनो हाँ एफसी ब्रेमर इज ही वाज द डिफेंडर गुड ऑफ द सेंटर सीजन बैक यार लास्ट सीजन हाँ सीरिया में वो अच्छी साइनिंग है बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू गॉट स्टिल थ्री पोजीशंस व्हिच आर वेरी वेरी कंसर्निंग यू नीड टू फोकस ऑन देम rather than signing another attacker उनके पास ऑप्शंस हैं अटैक में मालूम है मैं क्या बोल रहा हूँ ना एज मच एज मैं तो खुद डिलिक्ट फैन हूँ डिलिक्ट एंड ब्रेमर ना इन माय ओपिनियन डाउनग्रेड नहीं है मतलब क्योंकि आप देखो यूवेंटस के लिए डिलिक्ट हैज मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स व्हेन ही इज प्लेड तो आई डोंट थिंक प्रॉब्लम इज दे हैव लॉस्ट क्लियरली दैट लीडर यू नो दैट लीडर इज लेफ्ट सो बोनुcci इज देयर अ आई लीडर एग्री बोनुcci इज अ लीडर यस बट स्टिल यार मतलब वही है ना दोनों का जो पार्टनरशिप इतना ब्रिलियंट था यार फुटबॉल कमेंट बिग अप यार सब लोग यार 88 पीपल वाचिंग अगेन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम चेक आउट मैड्रिड पंडित्स एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और फुटबॉल विद कमेंट को भी करिए मेंबर ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी ऑफ कर कोर्स दो भाई एंड सब्सक्राइब आज तो रात को वाईजीआर के साथ स्ट्रीम है हमारी ओके नाइस नाइस यार मैंने भी मैसेज तो किया था वाईजीआर को लेकिन आई डोंट थिंक ही वाज अवेलेबल एट दिस टाइम बट कोई नहीं होपफुली विल कम नेक्स्ट टाइम इंटर मिलान से बिजनेस मत करो वी हैड बैड इंटर मिलान वाइब्स डेफिनेटली लेकिन यार कम ऑन कमिंग बैक टू द ट्रांसफर्स मतलब ओके यहाँ पर देखते हैं अंकित भाई डू यू थिंक द डोमिनो इफेक्ट विल हैपन अगेन विंडो इन द मिडफील्ड एज इट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन या फ्रेंकी डी जॉन्ग टू चेल्सी बर्नार्डो टू बार्सा देन रिप्लेसमेंट बर्नार्डो टू सिटी मतलब डू यू थिंक Verratti should be the person that City should be targeting. Very different, I know, to Bernardo Silva. Lekin maybe our Gundogan, Verratti kind of people are a little bit more solid. Is that fair comment? That's there, but you also need to look at a PSG perspective here because PSG, either if they lose Paredes, they're not going to let Verratti go. You know, even if they sign another midfielder in the window, they're not going to let Verratti go so easily. नहीं Fabian Ruiz, I know. पहले भी हाँ Fabian Ruiz आ जाएगा, but they're getting Fabian Ruiz for quality squad depth. Right now they're playing a back three with two holding midfielders. So Fabian Ruiz can play at that position. हाँ भाई मेरा तो fanboy moment
Bhaiya, the thing is Bremer is more suited for 3 center back which is Yeah, प्रीसीजन में तो he's been the worst defender, that's for sure. I agree. मतलब मैं वही बोल रहा था ना, Delict भी wasn't very good for Juventus as much as you know he's a great player. For I Juventus he think has not done very well. I mean, going by what he was expected to do, he didn't live up to those expectations, but I think he's a decent player for them. Yeah, of course he's a very good यार but again PSG में यार कितने midfielders चाहिए यार. PSG midfield is nothing with the variety. Like remember like Vitinha आया है, Renato Sanchez if I'm not wrong, ठीक है. Then they already have a Danilo Pereira, वो खेल सकता है वहां पर. Not that great Paredes still. को they are getting rid, then he's gone. Then yeah, as in backup Variety. Idrissa कौन? Variety. I'm just counting Verratti the midfielders. count कर लिया. Wijnaldum is gone. And then they have Idrissa Gana guy जा रहा है Everton. तो you have a point certainly. तो maybe यार Verratti को they cannot let go. That's actually a fair point as well. Lucas Paqueta is good player for City. Like I think again they'll end up Lucas. buying Lucas Paqueta. I think they'll end up buying Lucas Paqueta. लेकिन how will they use Lucas Paqueta? Because मतलब he is not your, as in he's not your typical number 8, is he? He's like ज़्यादा थोड़ा centrally ज़्यादा खेलता है, नहीं? He's more of a cam, you know. He's more of a Exactly. cam type player or a CF तो type player who likes to play freely. But तो I वैसे do है नहीं feel ना that position. I do feel he's going to, you know, adapt to the way City play. City play total football, and that's where you'll see probably Renato Sanchez. आप सही बोल रहे हो, you know, Lucas Paqueta centrally खेले, but you might end up seeing, I mean, hypothetical situation, but you might end up seeing De Bruyne back at number 8. You know. Yep, that might be a possibility. Bernardo Silva Renato भी तो एक Vitinha. typical number 8 कहाँ खेलता है? हाँ, बर्नार्डो सिल्वा तो फ्लोट करते रहता है यार कहीं भी फ्रंट सिक्स हाँ. में. वो तो उसका वो ही रोल है, मतलब लिटरली एनीवेयर ही गोस. PSG is almost done. Fabian Ruiz matter of time. Yes, Fabian Ruiz definitely looks good to me. हम यार लोग वही लेने है होते मतलब Fabian Ruiz को. ये भाई मतलब He was a target मैनचेस्टर for us in यूनाइटेड 2020. चेल्सी है सब ये क्लब. फैबियन रूइज वाज अवेलेबल यार, मतलब आई कांट बिलीव इट दैट यू नो. I mean, Chelsea के पास तो स्टिल अच्छे क्वालिटी मिडफील्ड ऑप्शंस है. यार मैनचेस्टर यूनाइटेड कर क्या रही है? Fabian Ruiz को कैसे जाने दिया? I mean, he would have been the perfect fit for Manchester United. They could have played an easily 3-man midfield with Eriksen as your creator, Lisandro Martinez as your CDM, and you know Fabian Ruiz as your typical number 8. क्या कर रही है Man City? They're going for Paredes. ये Fabian Rabiot. He's got a 80% passing success, and वो भी पीछे ही पास करता है बंदा. वो आगे पास नहीं करता कभी लाइफ में. वो भी अभी तक हुआ नहीं है. They are still discussing with his mom. Still, his crossing success is 20%. Ankit भैया, his long ball percent में आज ही start देखा था 47% long ball success rate for a number 8. That's pretty poor in my opinion. What are they doing? नहीं एक्चुअली ना मतलब Definitely not upgrade over McTominay. नहीं यहाँ पर वेदांत आई हैव टू पिच इन यार, क्योंकि यार मैं काफी सारे कमेंट्स देख रहा हूँ. आई अंडरस्टैंड दैट वो देयर ही इज अ प्रॉब्लम बिहाइंड द सीन्स, बट ऑन द पिच आई फील दैट ही हैज नॉट बीन यूज्ड इन द राइट मैनर इन यूवेंटस. आई जेन्युइनली फील दैट. आप देखो पूरा सीजन में ना एलेग्री, आई नो ही मिस्ड किएजा, तो व्हाट ही एंडेड अप डूइंग इज लास्ट सीजन में मतलब अगेन आई वाज सेरी एवरी मैच ऑलमोस्ट. आई एम टेलिंग यू दिस गाय वाज प्लेड एट लेफ्ट मिडफील्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स. तो आई डोंट थिंक ही इज नॉट अ प्लेयर जब जिसको आप क्रॉसिंग पे आप जज करोगे. ही इज, इफ यू सी द PSG डेज, he played in a 4-3-3 जैसे you said, right? But again not as a typical number 8. He played in a 4-3-3 but like a number 6. So that is the reason why Manchester United might be going for him, क्योंकि availability of the market यार कौन available है. हाँ, Fabian Ruiz kind of guys should have been picked पहले. Danny Ceballos, they could have easily targeted Danny Ceballos. He's a great midfield option which we have. यार लेकिन प्रीमियर लीग में कुछ उखाड़ा नहीं था ना, तो अगेन वो भी स्टार्ट देखते हैं ना. वो तो आर्सेनल की सिचुएशन आप देखो, उसको कैसे यूज किया जा रहा था. बेचारे को इंजरी इश्यूज थे. अभी ये यूनाइटेड के लिए तो एनी डे वो मैकटोमिने और फ्राइड से बेटर है. Ceballos बात वो है. अरे आप राहुल कितने बार करोगे यार कमेंट? इतने बार मत करिए, मैं पढ़ लिया आपका कमेंट. चाहिए अंकित भाई. I mean, looking at the Man United team, the midfield options they have, they ideally have to go for Eriksen, Lisandro Martinez at CDM, and Frenkie de Jong. They need to switch to 4-3-3. They can't play a 4. पहली बात तो रोनाल्डो एक लोन स्ट्राइकर खेल नहीं सकता. बहुत बुरा पिट जाता है वो लोन स्ट्राइकर पे. लोग ये देख नहीं पा रहे हैं इतना, but that's how. नहीं उसके लिए लेकिन he's a floating striker. DM का है उनके पास 4-3-3 के लिए. Lisandro Martinez, he's a very good passer. He's a very good. नहीं तो that's the thing ना, तो Lisandro Martinez has gone record saying that his preferred position is center back, moving into DM in game play. Ultimately it's the manager who decides ना. अभी Ancelotti भी तो अभी आपको अभी मैड्रिड का एक किस्सा सुना देता हूँ. अलेबा ने तो कह दिया था कि मैं तो सेंटर बैक ही खेलूंगा, बट अल्टीमेटली अलेबा को लेफ्ट बैक पे भी खिलाया जाएगा, एट टाइम्स मिडफील्ड में भी खिलाया जाएगा. That's the thing.
It's the manager who takes the calls, and यहाँ पे एरिक टेन हाग को full freedom दिया रखा है. So it's not the player who decides now; it's the manager. Plus, I feel Lisandro Martinez can do a much better job at CDM than at centre back. I यार feel मेरा वही है he मतलब really हाँ थोड़े challenges कर लेता है, success है वहाँ पे, but long term पे I think that उसको centre back पे trust नहीं करते. Plus Varane is going to return. हाँ, प्रीमियर लीग में सेंटर हाफ में मतलब अगेन मैंने तो यार काफी लोग गुस्सा भी हो गए, मैंने एक वीडियो चला ली थी कल थोड़ा हाँ. मेड फन ऑफ दैट, बट द फैक्ट इज यार काफी सारे मीम्स निकल रहे फॉर लिसांड्रो मार्टिनेज सेंटर बैक. देखो मेरा वही है यार, आप यू आर गेटिंग अ प्लेयर न्यू इनटू द लीग एंड ऑफ कोर्स ही इज कमिंग, ही इज अ टेन हैग मैन, रिमेंबर. हाँ वो सुनेगा टेन हैग का, लेकिन आप टेन हैग नोज इज बेस्ट, यू नो व्हाट ही वांट्स एंड हाउ ही गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम. तो वहां पर आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर दैट इफ ही इज प्लेइंग स्टार्टिंग एज अ सेंटर बैक, इट्स प्रीटी क्लियर वहां पर टेन हाग चेंज नहीं करने वाला, बिकॉज अभी शुरुआत कर रहा है, अपने शुरुआत ही रॉन्ग स्टेप में करे तो ही डजंट वांट दैट प्रॉब्ली. Yes, if Lisandro Martinez would have been in the league for maybe 5 months and then maybe things didn't work, Switch then to move into CDM. central CDM. अभी मेरा तो पहला यही था पूरे समर में, अगेन मैनचेस्टर फैंस इंक्लूड, मैं आपको पूछता हूँ यार सब लोगों को चैट में, why have Manchester United not moved away from Frenkie? Frenkie is not a core CDM anyway. So why haven't you moved They're away not from even वो getting him for CDM, भैया. They're not getting him for a CDM. exactly They're getting him for number 8. हाँ The board knows that Frank McTominay is not your everyday solution. First of all, right second of all, the thing is that they need players who are good on the ball, who are calm under pressure. Scott McTominay is not a smart player. Neither is your Fred. अरे वो तो I'm not a Manchester they United fan, can't. but I'm sick to death of seeing those two in Manchester United's midfield. Mm-hmm. And I don't know what Manchester United boards does. I mean, how is this a top club if they've got such a incompetent board? I'm sorry, I'm not a United fan, but that is my frustration seeing my idol struggle at such a team. मतलब हम तो देख के यूनाइटेड को डिप्रेस हो गए थे, तो वो तो खेल रहा है बंदा वहां पे, वो तो बेचारा भाग जाएगा ना. यार बोर्ड के बारे में एक कमेंट मैंने कल बताया था यार, सबसे पहले बोर्ड पर ब्लेम आता है. While I don't totally agree with that कि भाई सबसे पहले प्लेयर्स और मैनेजर का आता है, but there is a connection because if you see Ole Gunnar Solskjaer, he was kept longer than what he should have. ठीक है, आप देखो रैगनिक का आप लाए हो, आप टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट दिए हो, तो कौन मोटिवेट होगा भाई, कौन सा प्लेयर मोटिवेट होगा देखकर कि भाई आप मुझे मैनेजर दियो जो टेम्पररी आया है, तो क्यों, why will they give them 100%? Because at the end of the day these are all 25 years old or 30 year olds, तो नहीं करने वाले. Before the Bernardo deal, it was calm enough, but to be honest, we need signing and attack. I'm pretty sure Barca will win the league. Perez is चलो यहाँ पर आ जाते. Let's get to थोड़ा La Liga predictions. और यार 100 लोग देख रहे हैं. First of all, thanks for coming on. Do not forget to hit that subscribe button आपने अगर नहीं किया है to both our channels, Almighty Sports Plus as well as Almighty Blues FC. But in case you have not subscribed to Madrid Pundits, please do that. It's all tagged in the description below and as well as title. तो यार वेदांत, ला लीगा भाई, मतलब मैंने तो ऑलरेडी मेरी ला लीगा प्रेडिक्शंस कर ली है इन, आई थिंक वी डिड आई थिंक पॉडकास्ट विद सादिक भाई, उसमें मैंने किया था. अगेन फॉर पीपल हु मिस दैट, डू वॉच दैट. मैं अभी नहीं बताऊंगा, आई विल कम इन अ फ्यू मिनट्स. बट द फैक्ट दैट बार्सिलोना इज डूइंग दिस मैडनेस, आई थिंक द मिनिमम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बार्सिलोना हैज टू बी, कंसीडरिंग योर फोर्थ लीवर, दे आर काइंड ऑफ गिरवी रख रहे हैं, बेच रहे अपने राइट्स एंड ऑल दोस थिंग्स. 100% they have to win the league. No, Ankit, I have to disagree. It also, I mean, yeah, they've done quality signings. I mean, every player they've signed right now has probably been the best player for that particular team in that season. Frank Kessie was very, very crucial for AC Milan. Who else did they sign? Lewandowski, obviously, best player for Bundesliga, Bayern Munich, etc. Even in the world. And not just that, they've signed other quality options. But I do feel that it all comes down to, chemistry, team chemistry. The Barca team, with due respect to them, they're not stable yet. They'll take time to be stable with such quality options, with such personalities in the team. It'll take time for them to settle. And Xavi is not an experienced coach there. I'm not a United fan, but ये frustration निकलते सुन के अच्छा लगा यार. नहीं तो मैं तो दिखा रहा हूँ people who kind of commenting on the previous comments. But yes, so मतलब expectation will be that, right? मतलब I get how will they it, make but the money? kind of I have to root for Madrid here, right? Because they've won the La हाँ, Liga, of they've course. won the Champions League. But they've एक won होता है ना hearts. putting the neutral hat on. But don't you think that Barcelona are doing इतना madness because they are like नहीं भाई हमें जीतना है कम से कम 2 trophies इस बार, major trophies. नहीं, बार्सा how will they जीतेगी get back the money? कुछ ना कुछ तो बार्सा जीतेगी, but this team is not stable yet. There's still work to be done. Good point. They're still in a transition phase. They've got the signings, like they're on the final stage of the transition phase. They've got the signings. Now they just need to, add these puzzles to the picture, and they're sorted.
That's Barcelona right now. But with Madrid on the other hand, they've got a stable squad. They're not in a transitional phase. They've probably got the best midfield, best defense, best goalkeeper in the world. Probably the best upfront duo as well. The only position which we're probably concerned is with right wing, where Valverde does an exceptional job, and Rodrigo too. So, I mean, yes, Barca's done the signings, but just look at where Barca were last season. That also comes into the picture. बारसा एंड मैड्रिड में बहुत क्लोज गैप होगा. आई एग्री, बहुत क्लोज गैप होगा. बट आई जस्ट फील दैट स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में ना बारसा को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बीइंग कंसिस्टेंट, यू नो, बीइंग अ टीम जिसको स्टेबलाइज. अरे नहीं, लेकिन वेदांत, मैं वही बोल रहा हूँ ना, देखो दे हैव नॉट गॉट रिड ऑफ अ लॉट ऑफ प्लेयर्स एज वेल. आप देखिए डेम्बेले दे हैव बीन एबल टू कीप. ओबामेयांग आई थिंक दे एज मच एज उस पर आएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक यार 6 महीने में दे विल गेट rid of ओबामेयांग. आई थिंक डिपाय और ओबामेयांग दोनों को नहीं रीड करेंगे. ठीक है, इफ आई एम नॉट वहां मिस्टेकन पर ओबामेयांग का चेल्सी के साथ आ रहा है ना अभी कुछ आ रहा है, लेकिन इट्स मोर लाइक चेल्सीज इंटरेस्ट. बारसा कैन नॉट गेट रिड ऑफ हिम इन 6 months कंसीडरिंग यार ही इज डन वेल एक्चुअली. ऑन व्हाट बेसिस विल दे गेट he is rid of done him? हाँ, well, but they need to, you know, I mean they are strengthening the squad, but ultimately 25 man squad ही तो जा सकती है ना अंकित भैया. हाँ, तो I think they are getting rid of De Jong, they are getting rid of Brathwaite, they are getting rid of, I think obviously they got rid of Oscar Mingueza. और अभी यार मैं सुन रहा हूँ निको भी यार he has put in a request as per some reports. तो निको might actually move on as well, क्योंकि Pjanic उनका आ गए हैं back from loan, तो he might actually play that role, quite possible, I don't know. लेकिन हाँ, यहाँ पर देखिए if Barca gets rid of वो जो second team के players है ना, जो already experienced in a Barca system, तब आई 100% गो विद वेदांत, क्योंकि यार दे विल टेक लॉट ऑफ टाइम. और वहीं पर आई थिंक इट विल बी देयर एक्लीज हील, कंसीडरिंग इतना स्पेंड कर रहे हैं. दे कैन नॉट अफोर्ड टू गेट रिड ऑफ सो मेनी प्लेयर्स एट द सेम They टाइम. need और to हाँ, make बहुत sales. डिफिकल्ट Come है. on. I mean, they need to make sales. अगर वो बर्नार्डो सिल्वा को भी ले आते हैं 60-70 मिलियन जितनी भी डील है, I haven't seen, you know, the main. हाँ, तो डिपाई जा रहा है ना, डिपाई जा रहा है, डिपाई भी तो जा रहा है. हाँ, तो डिपाई जा रहा है, ओबामेयांग भी अंदर विंटर ट्रांसफर मार्केट में, if that is. अरे तो लेकिन स्ट्राइकर And कोई तो चाहिए ना, they बैकअप also. स्ट्राइकर कौन होगा? हाँ. But फिर They Aubameyang need doesn't one. want to play backup ना. Aubameyang doesn't want to play backup. He wants to start regularly. If you saw preseason में actually there was a one game जहाँ पर Aubameyang played left wing as well, और in that game मैं expect नहीं कर रहा था अच्छा करेगा, लेकिन अच्छा Ferran किया Torres था. भी वैसे स्ट्राइकर खेल सकता है. हाँ? फरान टोरेस खेल सकता है फॉल्स में डेफिनेटली, लेकिन अंशु वही है, फाटी. मतलब दे आर गोइंग बैक टू द सेम थिंग जो लास्ट सीजन में प्रॉब्लम थी बारसा की ना. दे वर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ लेवल इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, जो मैड्रिड की प्रॉब्लम भी है इन माय ओपिनियन इन स्ट्राइकर पोजीशन. अंकित भैया, वो वी एक हैव है टू ब्लेम हमारे. रिक्रूटमेंट. टीम इतना खराब है. ओके, यूनाइटेड के बारे में कर रहे हैं. बारसा सेंस बनाडो, आई एम रूटिंग फॉर बारसा टू विन इट. ओके, एटलेटिको मैड्रिड पर भी आते हैं. आई नो मुदित इज अ एटलेटिको मैड्रिड फैन. भाई मैंने एक पोल डाला है, सब लोग टेक दैट पोल, एंड द रीजन व्हाई आई एम पुटिंग एटलेटिको मैड्रिड इन द मिक्स, रीजन बीइंग दैट भाई एटलेटिको मैड्रिड के पास ऑप्शंस है. अब यहाँ पर आप देखो, बारसा हम बात कर रहे हैं, दे हैव टू सेल प्लेयर्स in terms of striker. They are selling obviously. Depay is going on a free obviously, and then हो सकता है Aubameyang अगर Chelsea somehow convince him and convince Barca that वो खेलेगा first team and will, you know, come on a, basically a good transfer fee. तो मैड्रिड का सेम है. हजार्ड इज बैकअप स्ट्राइकर. एटलेटिको मैड्रिड के पास दे हैव नेम्स ऑन पेपर. दे वहां पर कोरिया भी खेल सकता है आपका. बेसिकली यू हैव अंकित भैया, बट आप मुझे एक बात बताओ, सॉरी टू कट यू, बट एटलेटिको मैड्रिड से मैं नहीं जानता, बहुत लोगों ने कह दिया एटलेटिको मैड्रिड थर्ड फिनिश करेगी. मेरे हिसाब से तो एटलेटिको मैड्रिड गोइंग बाय द करंट स्क्वाड वोंट मेक टॉप 4, because Really? I feel that yeah that's how bad they are. I mean, they have won games off lately, but it also depends on how Simeone wants to play, you know. मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन लास्ट ईयर उसने अटैकिंग खेलना चालू किया, एंड एटलेटिको मैड्रिड वर 8th or 9th इन द लीग. अगर उसका मन आ गया that, you know, I've got so many again quality attacking options, I've got Felix, I want to incorporate him into the system, I've got Morata, who else do they have, Carrasco, Marcos Llorente, etc, who are good with the ball. Morata has been offered. अरे भाई, ओ यार, यार ये क्या चल रहा है इस क्लब का ये यार. बाई चांस होना मोराटा चेल्सी में मैं हाथ जोड़ता हूँ यार. वो प्रीमियर लीग के लिए फिट नहीं है भाई बंदा. इट्स अ फैक्ट. मतलब चेल्सी फैन नो द पेन, बट ही स्कोरिंग गोल्स इन प्री सीजन यूवेंटस के साथ हैट्रिक किया था बंदे ने. तो फुल फॉर्म में है, बट इट्स अ वर्ल्ड कप ईयर राइट, सो मे बी he'll give it. तो यू आर सेइंग दैट एटलेटिको मैड्रिड नॉट इन टॉप 4. पीपल इन द चैट सब लोग बोले यार, वेयर डू यू सी एटलेटिको मैड्रिड एंडिंग इन ला लीगा दिस टाइम? यार मैं बोलता हूं फोर्थ, बिकॉज़ सेविया हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स एज वेल. कम ऑन, But दे हैव Sevilla लॉस्ट are going to sign, na. Sevilla are going to sign. They've got Isco. They're going to sign centre backs. They're हाँ, not but done with their इसको window yet. गुड,
But center backs, can they replace a Diego Carlos and a Jules Koundé? मतलब outright to I begin guess with. not, but we have seen them do some stuff in the window previously. हाँ, I know उनका मतलब I like the wingers by the way. Always I've liked Yeah. the wing player थोड़ा सा. इस साल यूरोपियन गोल्डन बूट तो टीमो वर्नर था भाई साहब. I भाई mean, yes. let's go back to Atletico Madrid. मतलब लोग डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है, सबका अपना ओपिनियन है. फोर्थ एटमैक्स कर जाएगी एटलेटिको. हमने जो उनके ऑन पेपर नेम्स देखे हैं, मोराटा है, फीएक्स है, ग्रिezmann है, और कौन है उनके पास स्ट्राइकर, कोरिया है. 3 साल पहले अगर आप ये सब नाम पढ़ते, आप लोगों को लाइक हाँ डर लग रहा है हमको एटलेटिको की अटैक से. सुआरेज उन लोगों ने खो दिया है जिन्होंने एटलीस्ट 20 गोल्स एक सीजन में उनके लिए दिए थे पिछले 2 साल. पिछले साल इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ कितना 12 13 15 गोल दिए थे. बट अगेन दे लॉस्ट अ प्लेयर हु कैन स्कोर 20 गोल्स अ सीजन ना. ग्रिezmann से आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या? मोराटा पिछले सीजन यूवेंटस में अच्छा नहीं किया था. फीएक्स ने हाँ ठीक है प्री सीजन अच्छा किया, बट कैन यू रिलाई ऑन हिम? विल ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जिसके अराउंड आप सिस्टम बिल्ड करोगे, बट सिमियोने इज नॉट डूइंग दैट. तो वही मेरी क्वेश्चन है. करास्को इज 35 36 34 जो भी है, he is also aging. You don't have another left wing back या left midfield as quality as Carrasco. And surprisingly he is the best performer for them अभी तो. They cannot depend on 34-year-old. I agree 100% वहां पर. They've got Renan Lodi and Ronaldo, but Renan Lodi has not been a consistent performer for them as well. बिल्कुल. And I'm a Madrid fan. मेरे को तो hate है वैसे भी एटलेटिको के लिए, तो मेरे को तो कुछ होगी ना कहीं ना कहीं. यार अगेन मतलब तो let's get it. By the way, big up यार आपको. I think I forgot to give a shout out to the members here. यार अभिषेक definitely big up है absolutely, and as well as Saif, Real Madrid fan, can't wait for Barca versus Chelsea in UCL. बिल्कुल बिल्कुल. मैं तो बोलता हूँ you know what, मैं you know what I really want. I want Barcelona versus Chelsea in the round of 16 और हम जीत जाए obviously, और हम क्वार्टर फाइनल्स में खेले इंटर मिलान और द अदर वे राउंड. You know that is what I want because Lukaku against Chelsea दिखना चाहता हूँ यार मैं. मतलब उसको तो मेरे को तो लग रहा है अंकित भैया, मेरे को तो लग रहा है ये राउंड ऑफ 16 में हो जाएगा. करेंगे यार. यूएफा है, यूएफा यू नो हाउ इट इज राइट. वी विल कम टू दैट. एक तो शायद ग्रुप में हो जाएगा. दे कांट वेट. आई थिंक इंटर मिलान या कोई ग्रुप में आ जाएगी. देखते हैं व्हाट इज पॉसिबल व्हाट इज नॉट. एंड यस पीपल, भाई करीबन 150 लोग तो देख ही रहे भाई. सब लोग लाइक कर दीजिए. डजंट टेक अ बक, जस्ट प्रेस ऑफ अ बटन. और साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए टू बोथ आवर चैनल्स. दोनों ही नीचे ऑलरेडी टैग्ड है इन द डिस्क्रिप्शन, एज वेल एज मैड्रिड पंडित्स इज इन द टाइटल इटसेल्फ. सो प्लीज डू दैट. And yes, Milinkovic Savic and Gakpo यार हम भी again Rahul do not spam यार please. लेकिन I will take comments if it's related to what we're talking. By Milinkovic Savic, I know that he's been linked every time possible. लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड का आज वापस से न्यूज आ रहा था यार. मेरे ख्याल से नहीं जाने वाले. और एवरी सीजन आता है वो, सिंपली पुट राइट. लेट्स सी. और कुछ नहीं, थर्ड यूनाइटेड अकेले प्लेयर्स ही लेकर आएगी. बर्नार्डोविच और राबियो लेके आएगी. उनकी बोर्ड है ही ऐसी भाई. पिछले कितने लंबे टाइम से वी आर सीइंग देम गेटिंग ओल्ड स्ट्राइकर्स. बर्नार्डोविच 33 है ना. कवानी को भी उतनी एज पे लेकर आए थे. नहीं वो, लेकिन वो तो दे आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड. दे वर होपिंग कि यार वो एक चीप में आ जाए बंदा एज अ स्क्वाड प्लेयर एट बेस्ट. और एज पर रिपोर्ट्स पहला जो बोलोगना ने ना किया है रिजेक्ट, उसके बाद दे नो लॉन्गर इंटरेस्टेड. यार मोराटा इज सो अंडररेटेड. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कमेंट यार? मतलब डू यू एग्री विद दिस? Come on. I won't say he's underrated, but I feel he's overhated. I feel मड्रिड के लिए उसने 2-3 सीजन काफी अच्छे से परफॉर्म किया है. 20-22 गोल भी दिए हैं उसने हमके. आप लोग के लिए तो आप लोग के लिए वो अच्छा नहीं खेला है. तो नहीं मैं बोलता हूँ क्यों ना. रीजन है उसका. देखो 100% आई एग्री विद वेदांत कमेंट. वहां पर यहाँ पर डिफरेंस है यार. चेल्सी में यू प्लेयर्स अप फ्रंट. हम लोग कैसे खेलते थे बिफोर टुकल केम? हम कैसे खेलते थे? यू प्रॉपर नंबर 9. इज ही अ प्रॉपर नंबर 9 ऑन हिज ओन? ही इज नॉट दैट गाय. सिंपल एज दैट. ठीक है. ही इज अ प्लेयर हु नीड्स अनदर नंबर 9 अराउंड हिम मेरे हिसाब से. करेक्ट. जैसे स्पेन के लिए होता है ना जेरार्ड मोरेनो ऑन द राइट हैंड साइड, यू नो, विद हिम. दैट मेक्स सेंस. हाँ बिल्कुल. आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस. इवन इन मैड्रिड यार, मतलब इन हिज अर्ली मैड्रिड डेज आई रिमेंबर ही वाज एक्चुअली हिमसेल्फ प्लेइंग वाइड. और इनफैक्ट ही स्टार्टेड हिज करियर वेरी वेल इनफैक्ट. और यूवेंटस भी गया था वहां पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वहां था यार क्रोएशियन स्ट्राइकर, क्या नाम है उनका? लेजेंडरी क्रोएशियन स्ट्राइकर यार. हाँ एग्जैक्टली, मैंजुकिच वाज देयर राइट. तो वहां पर ही देयर वाज हेल्प फॉर हिम. नहीं यार वो कंसिडरिंग ही होता जाए. मेरे ख्याल से नहीं होने वाला यार. हर सीजन होता है यार. ये तो लिटरली हर सीजन होता है. और शायद इज अग्रिंग यार. एटलेटिको मैड्रिड विल फिनिश 6th. तो हो जाएगा. थर्ड कौन फिनिश करेगा? विलारियल?
नहीं, Villarreal is not a league team. They can't do it consistently Yeah, 38 even games. I Man. agree. Yeah. I've seen that happening. But Villarreal ने अपनी squad बहुत strengthen करी है. But I think Sevilla, if they sign centre backs, I think they'll go back to third. मेरे हिसाब से. Mm-hmm. Mm-hmm. Real Betis should have a great season. Great team. You know, individual players तो काफी अच्छे हैं. The way they play. Real Betis fourth. I think Valencia should come back. You know, Valencia खेली है Champions League football if you all don't know for 2-3 seasons. पहले अभी नहीं. अरे बहुत खेली यार पहले तो मतलब कौन से हम बाय द वे वी लॉस्ट टू वेलेंसिया इटसेल्फ ना इन द ग्रुप स्टेजेस लास्ट मैच जिसके 2-1 हारे थे आप लोग. हाँ उसके कारण हम गए वी मेट बायर्न इन द राउंड ऑफ 16 अंडर लैम्पार्ड आई रिमेंबर दैट मैच वेरी वेल और वेलेंसिया And बैक you इन all द डे आल्सो conceded 4 रिमेंबर against. You all conceded 4 against Bayern, ना? 4-0 or something. हाँ इट वाज बैड परफॉर्मेंस उस समय तो खैर एनीवे इट वाज अ वेरी यंग मतलब हम ट्रांसफर्स भी नहीं कर पा रहे थे ना लेकिन हाँ रियल सोसिएडाड हैड अ फ्रीक सीजन यस सोसिएडाड आल्सो Sociedad is, in my opinion, should do fourth. Sociedad have to. सोसिएडाड Because पिछले 2 सीजन में मैंने देखा है Sociedad को start up, they have an amazing start, but I don't know what happens to them. Injuries happen, or you know, a bad calendar, too many games, you know, because they compete in Copa del Rey also. वो भी आते रहते हैं. तो I do feel Sociedad fourth कर जाएगी. क्या था मैंने? Madrid, Barcelona, क्या बोलते हैं? Betis, Sociedad, Atleti. नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं? Madrid, Barcelona, if Sevilla signs centre back, Sevilla, Sociedad, Atleti, वेलेंसिया Betis, Valencia, Villarreal. चलो आपने सुन गए यहाँ पर यस संतोष has just corrected us Carrasco looks 34 but he's Yeah, I'm 28 sorry, मैं इसकी बात कर रहा था. The CDM they signed, Witsel, he's 33. okay Yeah. the Belgian guy right CDM, yeah, the holding midfielder they've signed. Witsel yeah बिल्कुल even I got it wrong चलो कोई नहीं what if Chelsea face PSG Bayern यार what if यार हमने काफी बार हमने फेस भी किया we have beaten them we have lost to them दोनों ही sides so we'll see that अभी यार Chelsea का भी हुआ नहीं है we are not ready as a team but we'll get there but Champions League knockout stage में बहुत सारे महीने बाकी है तब तक this team might get better who knows yeah can go bad as well Ankit, do you think that Chelsea will make top 4 this season going by the signings they've made already? या तो मैंने अपना प्रेडिक्शन फाइनल में दे दिया ना ऑब्वियसली एक वीकेंड तो हो भी गया खैर मैंने बोला वील गेट टॉप 4 आर्सेनल मैंने बोला है कि दे विल प्रोबब्ली लूज आउट क्योंकि अभी भी एक कंट्रोवर्सी व्हिच इज लेफ्ट इज थॉमस पार्टी कंट्रोवर्सी दे आर इग्नोरिंग इट आई डोंट नो हाउ ऑन व्हाट बेसिस मतलब यही है डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ फैन बेस समटाइम्स राइट सेम थिंग हैपेंस टू मेसन ग्रीनवुड पीपल आर लाइक यू नो एज इन बिहाइंड हिम बिहाइंड एवरीथिंग व्हिच आई एग्री विद लेकिन अभी यार थॉमस पार्टी के बाद मीडिया इज इग्नोरिंग एवरीवन इज इग्नोरिंग हाँ इट माइट बी फेक न्यूज बट व्हाटएवर यार एक थोड़ा भी अगर ब्लेम आया ना how can you play such with such blame you know this such kind of player I have no idea तो मुझे लग रहा है that will come back biting to them and they उनके पास बैकअप एज अ सेंट्रल मिडफील्डर नहीं है हमारे पास अगर फ्रेंकी आ जाता है अगेन इफ्स एंड बट्स है if फ्रेंकी आ जाता है if फोफाना आ जाता है और even one comes I think हमारी स्क्वाड जनरली हमारी बेटर है that's my take so let's see I'm just hoping as a Chelsea fan like you're the Madrid fan is saying that आप जीतोगे और मुझे तो लग रहा है बारसा यार they cannot get rid of Aubameyang so that might be the difference maker क्योंकि यहाँ पर Hazard as much as I like him is he that backup to Benzema you know खुदा ना खासा कुछ हो जाए Benzema को just saying then what about it यहाँ पर एटलीस्ट Aubameyang है बारसा में that's what I'm saying touchwood yeah exactly मतलब वही squad depth comes into picture you know that's what I'm pointing towards I feel कि as I said earlier I feel कि अगर समर ये विंडो में कुछ नहीं होता है I think अभी भी हमारे पास 2 हफ्ते हैं नहीं होता है कुछ I think it's all going to be in winter. Madrid जब से देख रही है कि यार कौन सा स्ट्राइकर वर्ल्ड कप में उधम मचाएगा उसको उठा के ले आएंगे विंटर में हाँ जनवरी में बहुत सारे कमेंट्स आ भी रहे थे ना यूनाइटेड को फॉर मारियानो का क्या ले लो भाई ले लो हमसे ले लो मैं खुद आके डील कर जाऊंगा फ्री में बिल्कुल अगेन पीपल डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम सर्टेनली हैज मानव थैंक यू भाई यहाँ पर देखते हैं सू ओके बहुत सारे आ गए फैंस चेल्सी आर कंसीडरिंग अ मूव फॉर क्रिस्टल पैलेस या ज़हा भाई अगेन ही इज अ यूनाइटेड रिजेक्ट बट काफी साल पहले था जस्ट लाइक अ डिपाई मतलब आई वुड पर्सनली गो फॉर अ डिपाई बिकॉज ही हैज दैट यू नो द नैक ऑफ जो टूकल एलिमेंट है ना
फ्लोटिंग फॉरवर्ड का, उसमें है दैट एलिमेंट. और प्लस एक अनफिनिश्ड बिजनेस इन द प्रीमियर लीग. आई नो टॉकिंग अबाउट अनफिनिश्ड बिजनेस, लास्ट टाइम अच्छा नहीं किया था विद लुकाकू. But what do you think? Like, Chelsea should we go for a winger or should we go for a proper striker? I feel that striker is probably much of a need, nahi? Striker is a need, Ankit Beha, but the kind of profile Tuchel wants, that is not there in the market, to be honest. हाँ. He wants a possession-oriented player, जो कि शायद से अगर मैं कोई टॉप नेम देख रहा हूँ तो मेम्फिस डिपाई एक ऐसा है जो कि एक फ्लोटिंग प्लेयर है जो प्रेस करेगा आपके लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट मेम्फिस डिपाई भी एक 4-3-3 में नहीं बैठेगा आपके लिए. You need to play a target man with him. That's the kind of play Tuchel wants, and I think that's plan what B he's trying to basically. bet with. That's what Tuchel's trying to do with Havertz. Havertz is your possession-oriented player who doesn't crumble I usually. agree, Vedant. वही मैं बोल रहा हूँ. देखो, Havertz can become your plan B, and then your plan is Memphis Depay, because Zaha is not your core striker. मतलब आप शुरू नहीं कर सकते मैच Zaha as a central striker. He can be your left winger. वहां पर Sterling false line हो जाएगा. Then I don't think you're getting the best out of Sterling as well. नहीं? That is there. It actually all depends on how Sterling plays. Because over the course you've seen, Sterling has given a good amount of numbers at City, but this is a completely different system, completely different team, which is having, some sort of ups and downs. They've lost good players. They have gotten good players, obviously, but still, long way to go. Dark बिल्कुल, horse in La बिल्कुल. Liga. ये क्वेश्चन मैं पहले आपको क्या लगता है कौन है डार्क हॉर्स इन ला लीगा दिस सीजन? Yeah, dark horse, matlab, I don't know if we can call it dark horse, but I think it has to be one of those, again, Real Sociedad and Real Betis, यार. मतलब I would still consider them dark horses because वो traditionally top 4 में नहीं आ रहे, right? तो मैं तो उनको ही बोलूंगा, definitely. And one of them I would go with should be. हाँ बोलो one of them. नहीं, वही बोल रहा था, one of them. I would go with Sociedad, to be honest, because Sociedad first half अच्छा कर लेती है, second half में नहीं करती है, but Sociedad has made a few signings. They've got the money also. So I feel Sociedad should make top 4. They're dark horses. बिल्कुल, बिल्कुल. Maguire overrated. बेचारा यार, मतलब he's taken so much hate in the last season, but वो क्या अच्छा deservedly. खेला है, वो अच्छा खेला है ऑफ लेटली. मैं अभी भी देख यार रहा हूँ बेचारे को लेकिन बहुत गालियां पड़ रही है. आप बेंचमार्क क्या रख रहे हो यार? बेंचमार्क क्या है? बाकी लोग भी हक रहे हैं ना. सॉरी यूनाइटेड फैंस, और बट कुछ नहीं हंसी आ बोलता, गई यार, यूनाइटेड मतलब फैंस दैट्स अ अपने फैक्ट. पीछे पड़ जाएंगे यार. लेकिन यार देखना, वो चेल्सी का खेलेगा ना तो he'll have his A game. I know that as well. वो भी होता है, मतलब he'll have his kung fu game रहता है यार. भाई टीमो वर्नर 20 मिलियन नहीं यार, 25 मिलियन है. 25 What मिलियन I पाउंड्स read है. was कि 30-35 है. 30. तो अगेन पीपल, आप नंबर से फेंकते हो ना भाई, करेंसी भी बोला करो. देयर इज अ डिफरेंस. और मैंने वो काफी लोगों को चैट में समझाया था लास्ट टाइम, जो मैंने वीडियो किया था टीमो वर्नर यूरोज पे. मैंने डॉलर्स. पता नहीं वेदांत आपने देखा, मैंने रैंट किया, मतलब ऑन टीमो वर्नर की, भाई जा रहा है तो अच्छा जा रहा है, गुड रिडेंस. पीपल मेनी हैव नॉट अग्रीड विद मी, लेकिन वही है, इज ही अ वीक इन वीक आउट प्लेयर? नहीं. लाइक मे बी व्हाट अ मोराटा वाज. मोराटा ऑन हिज डे कैन बी वेरी गुड. I feel that Chelsea fans expected a lot from him. They expected him to be challenging for the Golden Boot. बट तो नहीं, काफी हमने सारे साइन इसलिए किया था वेदांत. ही वाज सपोज्ड टू बी दैट मिसिंग पजल. देन वापस लुकाकू वाज सपोज्ड टू बी मिसिंग पजल. तो 275k per week in Chelsea is unheard of. Chelsea में is not the norm. So if he's getting that, or you have the audacity in the end, brilliant attitude, but in the end you're having the audacity to question your manager who has actually tried him. आप देखो, he tried his level best to get the best of Timo Werner. लेकिन Timo Werner मारता था या तो मैन सिटी के साथ, या तो रियल मैड्रिड के साथ, या तो साउथहैम्पटन के साथ. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द क्लब्स? बीच वाले जो क्लब्स थे ना, ही यूज्ड टू नॉट, बिकॉज वो लोग रखते थे लो ब्लॉक. ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ स्ट्राइकर. तो he doesn't fit in that system at all, with opposition fans play, Chelsea. और वो विंगर भी नहीं है, तो आप कहाँ पे फिट करोगे? ही इज नॉट ए ड्रिबलर. तो इट्स फेयर. और 30 million euros इज द फी, नीरज, डेफिनेटली. आई थिंक इट्स डिसेंट फी, इट्स नॉट अ ग्रेट फी, लेकिन हाँ, एक आई तो विश हिम बेचारा ऑल द बीच बेस्ट. में इतना डर गया था ना बॉल टच करने से, उसको इतनी हेट मिलने लग गई थी. आई रिमेम्बर 2021 में खास कर मारियानो इज द मोस्ट हेटेड प्लेयर बाय माद्रिदिस्tas. प्योर नफरत फील होती है उससे. नहीं यार, number 7 is secondary. The main reason is that guy doesn't want to go out, and the reason why he doesn't want to go out, because he just wants the money. He's after the money. He's not after the club. He's got literally nothing to do with the club. अगर आपको नहीं मालूम अंकित भैया, he's a La Fabrica product. और रहता है कि आपका एक academy graduate है. He'll feel for the club. He'll die for the club. कैसे नाचो हमारे लिए करता है. He's a proper La Fabrica product. He's literally sacrificed his career for Real Madrid to stay there.
तो ये नहीं करता, ये तो पैसे के लिए बैठा है बस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। गुड पॉइंट। दैट्स द यहाँ प्रॉब्लम, पर एंड वेरी अभिषेक का लेजी, वेरी लेजी। नहीं नहीं, आई हियर यू डेफिनेटली। और बाय द वे यार, ओवर 100 पीपल वाचिंग, अगेन क्विक अनाउंसमेंट फॉर पीपल जो मिस कर दिए होंगे पहले। यस, डेफिनेटली लाइक तो करिए स्ट्रीम को, डेफिनेटली हेल्प्स एवरी स्ट्रीम, नीड्स टू बी लाइक, बीट एनी कंटेंट क्रिएटर। मैं बोलता हूँ जस्ट अ प्रेस ऑफ बटन। उतना ही नहीं, आप सब्सक्राइब भी करिए, एब्सोल्युटली वो भी एक प्रेस ऑफ बटन है, डेफिनेटली करिए। बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाइए, नॉट जस्ट फॉर आवर 2 चैनल्स। यस, हमारा एक दूसरा चैनल भी, वहां पर भी बहुत कंटेंट आ रहा है। आज रात को वापस हम लाइव है, एंड ऑफ कोर्स मैड्रिड पंडित्स भी। और यहाँ पर क्विक अनाउंसमेंट ये है अबाउट मेंबरशिप। ठीक है, मेंबरशिप में इस हफ्ते देर, इनफैक्ट आज ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर इज अ 50% डिस्काउंट गोइंग ऑन। सो इफ पीपल आर इंटरेस्टेड, चेक आउट अ मेंबरशिप एंड यार ज्वाइन करिए। There's a lot more interaction that is planned, be it on Discord, be it generally else on social media. So definitely you're more than welcome to become members. Would mean a lot, absolutely. यार डिपाई और फोफाना में, दोनों में से अगर प्रायोरिटी मैं पूछूं ना आज के दिन में, तो मैं, द फैक्ट दैट एस्पिलिक्वेटा इज स्टेइंग इन चेल्सी, आई वुड गो विद डिपाई, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम इतना गोल स्कोर करेंगे टू चैलेंज लिवरपूल एंड सिटी। और मैं चाहता हूँ हम जीतेंगे तो नहीं खरा, लेकिन वी एटलीस्ट चैलेंज, मतलब वो मेरा एक व्यू है। I don't see your Mount, Sterling, and Havertz to be that reliable goal scorers. As much as Sterling का record and all that, लेकिन do we have that amount of creativity? नहीं। लेकिन अगेन फ्रेंकी अगर आ जाता है तो मे बी he'll solve both the issues, क्योंकि फ्रेंकी can provide those balls as well as वो सेंटर बैक भी खेल सकता है कभी कभी। I'm just saying it out there. I don't know. Wishful thinking. देखते क्या होगा। Good one, right? Want to see Ansu Fati again? Great. यार Ansu Fati का क्या लगता है यार, मतलब is he a starter over Torres अगर he's fit for Barca? I've spoken with a lot of Barca ultras about it, and that is something which even I have noticed. So, see, I'm a Spain fan. तो Ansu Fati तो regularly खेल रहा था स्पेन में, है ना? Correct. The problem with Ansu Fati, is that if he's not scoring a goal, he's not giving you anything in the game. He's just a goal scorer. He doesn't add much to your game. Work rate उसका poor है. Creative output तो है ही नहीं उसका. He's just a goal scorer. He's just a poacher. He's not going to give you much in the game. Now, is it due to injuries? Or is it because that's the kind of player he is? That's a very big question. यार स्किलफुल तो है बंदा, यार स्किलफुल तो है, लेकिन वो ही डजंट डू, वर्क रेट नहीं है। अंकित दे स्किलफुल तो हर एक प्लेयर है ना जो टॉप क्लब में खेल रहा है। हाँ, स्पेशली बारसा में तो यार यू एक्सपेक्ट दैट, स्पेशली समवन हु इज फ्रॉम ला मासिया। मतलब चेल्सी ऐसा प्लेयर है जो स्किलफुल नहीं होगा, बताओ ना। नहीं सभी नहीं, स्किलफुल बिल्कुल है। बिल्कुल It's not बिल्कुल। about skillful. ये He's a winger. He's got to have some creative output as well. He doesn't give any creative output to Barca. Over the course of last 3 years, he's just got 3 or 4 assists to Barca. तो definitely नहीं है. You need someone like a Dembele and Rafinha with Lewandowski. Ansu Fati cannot play with Lewandowski. Yeah, that's एकदम फेयर पॉइंट है, एब्सोल्युटली। भाई लाइप्जिग इस बार बायर्न को टक्कर दे सकते हैं भाई। दे आर डूइंग, सेस्को इज गोइंग टू लाइप्जिग नेक्स्ट सीजन। लाइप्जिग के स्ट्राइकर्स देखो यार, मतलब नेक्स्ट प्रीटी श्योर एंकुकू निकल रहा है नेक्स्ट सीजन। फ्रंट टू सॉर्टेड। एक सेकंड, they've got Silva. They have Andre Silva. They have Timo Werner now. Kunku. Poulsen, Forsberg, Dani Almo, Nkunku. 7 ऑप्शंस नेक्स्ट सीजन होंगे। तो मुझे क्लियरली लगता है ना, नहीं सक्सेशन प्लानिंग है वेदांत। एंकुकू बोल दिया होगा भाई ये लास्ट सीजन है, उसी बेसिस पर मैंने यहाँ पर कमिट किया है। प्रीटी श्योर एंकुकू इज गोइंग टू गो, मतलब लेकिन एंकुकू कहाँ जाता है भाई? Madrid linked है to be honest. लेकिन देखते यहाँ पर और थोड़ा देखते हैं। वेटिंग फॉर सुपर कप। भाई आप लेट आए हो आदित्य, हमने पहला आधी घंटा वही बात किया है, तो प्लीज डू रीवॉच इट। डेफिनेटली वी हैव वो आधा घंटा देखने के बाद हमारे यहाँ आ जाएं, वाईजीआर भाई के साथ स्ट्रीम है हमारी। हाँ वो भी लुकिंग फॉरवर्ड टू वो भी कर लेना। कितने बजे भाई आपकी? 10 o'clock। चलो सही है। और भाई 10:45 हम लाइव है ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस। वहां पर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडियन कंटिजेंट विच डिजर्व शाउट आउट, बिकॉज ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस में हम फुटबॉल की तो बातें करते ही है, बट डेफिनेटली कॉमनवेल्थ गेम्स रिक्वायर्स डेफिनेटली एक बैकिंग यार। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देम, एंड ऑफ कोर्स फीफा टाइम भी है, देवेंकू को एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई काफी सारे टॉक्स हो गए। अभी यार एक्सपेक्टेशन पूछ रहे थे अबाउट द सीजन बाय रियल, एज अ रियल मैड्रिड फैन, considering आपने लिया है रूडिगर, चौमनी, and a lot of other people who stayed back, right? Don't you think that you would expect again a UCL, 15th UCL, or a bit too much?
I think it's a bit too much, to be honest, because this squad still needs some changes. I mean, we're not a perfect, crisp squad like how City, Liverpool, Bayern have right now. So we are at the we as a club need to be at the level of City, Liverpool, the way they are right now in terms of. So I feel that we can win La Liga. It's going to be very tough and very close, but I feel that we are going to lose the Champions League. I feel we'll go to the semis, but we'll get eliminated there Hmm. because we are playing 70 games this season. That's going to be a and we don't have that much squad depth up front. So scoring goals could be a problem for us. राइट यार, इस बार वापस से वही है, क्लब वर्ल्ड कप होगा फरवरी मार्च में, लाइक लास्ट टाइम बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कप. सो दैट्स गोइंग टू Yeah. बी एन इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि यार अगेन दैट काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो चेल्सी में जो लास्ट सीजन में हुआ था ना, ऑलमोस्ट पीपल आर लाइक ओके, प्लेयर्स आर लाइक उसके लिए ही खेल रहे थे और बाकी मैचेस में हक दिए थे. तो दैट माइट बी अ फैक्टर, क्योंकि यार आपकी मोटिवेशन होती है, बिकॉज एवरी ईयर यू डोंट प्ले अ क्लब वर्ल्ड कप, एज मच एज इट्स Mm. नॉट लाइक अ मेजर मेजर ट्रॉफी. आई स्टिल काउंट इट एज मेजर ट्रॉफी फॉर श्योर. तो I mean, I दैट्स have to because the jersey just looks too good with that Club World Cup badge. Exactly, And exactly. Madrid तो 4 साल 5 साल लगातार खेली Club World Cup. So yeah. Fair enough. And yes, people, don't forget to like and subscribe. तो पिचिची कौन ले रहा है, according to you? Benzema. बेंजेमा. अरे भाई, ये यहाँ पर मैंने इस बार बोला है लेवेंडोव्स्की, क्योंकि बेंजेमा को आई डोंट नो मैन इफ ही कैन स्टे दैट फिट. अगेन आई वुड वांट टू, आई एम नॉट सेइंग अदरवाइज, लेकिन दैट इज माय ओनली क्वेश्चन. यहाँ पर ज्यादा ऑप्शंस है फॉर लेवेंडोव्स्की टू गेट द बॉल. Okay, we have Miss Melina down. Miss Melina, big up. Hope you're well. Yes, of course, people do check out Miss Melina's channel as well. She does a lot of good content. An Arsenal fan in the house, but she knows the stuff inside out. She's been supporting the channel almost when we were only 500 subscribers. So great for that to come on, and hopefully we'll stream again sometime together, Miss Marina. I know we've been trying, Mel, but again, what everyone is missing that this year we have World Cup, so it could come dark horse winning the league. Wow. That's a big call. That's a big call. मतलब Abhishek is actually thinking that Atletico Madrid ले जाएगी यार और Sevilla ले जाएगी. Who knows? I don't know, man. I still don't feel. There's a huge gap in terms of दोनों, Barca, Real Squad Madrid versus quality. others. बहुत ही बड़ा है भाई. सब लोग बेंजेमा बोल रहे हैं, मतलब कम ऑन, वेयर आर द बार्सा फैंस, कम ऑन. They know ball. ये देखिए, संजीव बोल रहे हैं लियोनेल मेसी. बार्सा फैन तो लियोनेल मेसी बोलेंगे, चाहे पिचिची हो या कुछ भी हो. नाइस वन, नाइस वन. विन ला लीगा प्लस कोपा डेल रे एंड सेमीज ऑफ यूसीएल माय एक्सपेक्टेशंस, एंड ऑफ कोर्स क्लब वर्ल्ड कप है, सुपर कप है. और टॉकिंग अबाउट सुपर कप, मैं इतना बोल देता हूँ, फ्रैंकफर्ट, एंड आई नो मुदित फॉर एग्जांपल इज अ जर्मन फुटबॉल फैन. ये एक चीज है कि I think only Bayern Munich has won the Super Cup in German clubs. So for Frankfurt, it is a piece of history which they will be doing. अगर by chance they are able to take it. And again, people who joined late, आपके ये भी prediction डाल दीजिए. What do you think is going to happen in the Super Cup? मेरा खुद का prediction मैंने दिया नहीं है. I genuinely feel that Frankfurt losing Kostic is a huge deal for them. As much as Kamada is one of the players that I really like, I genuinely like, और बोरे भी है, और बोरे has a knack for big games. और their crowd etc will help. I know that, but still I'm saying यार वो स्कोर तो करेंगे because of Real Madrid not being so sure who's going to play, who's not in the back four. मैं जा रहा हूँ 3-1 to Madrid. That is my score line कल का. आप लोग बोलिए. और यहाँ पर मेरा एक prediction है about Bernardo Silva. Bernardo Silva, yes, he is going to Barcelona. As much as I don't like saying it, but then we will have to meet Barca in the Champions League and eliminate them. Just saying it out there because what happened. All love to Barca fans, but just saying it. क्या बोलते हो यार, बर्नार्डो सिल्वा जा रहा है ना? आपको तो अंकित भैया, लास्ट टाइम मैं बारसा से इतना डरा ना 2018-19 के सीजन में था जब उन लोगों ने हमको 5-1 पेला था. उसके बाद से मैं बारसा से कभी नहीं डरा हूँ. एंड वही इससे मतलब बर्नार्डो सिल्वा टू बारसा सुन के मेरी अंदर से रूह कांप रही है. मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली. नहीं, लेकिन डर लग रहा है देखो, मुझे. आज सुबह तक है ना, मैं आई वाज लाइक, मैं बोल रहा था पत्थर की लकीर, जिससे बोल रहा था नहीं यार, डियोंग अड़ रहा है, वो नहीं जाने वाला. लेकिन अभी नहीं एज जाना पर तो चाहिए, नहीं जाना चाहिए. वो मतलब आई रहता नो चलेगा लीगली मेरे ही को. कैन फाइट. I know he legally he can fight, but हाँ. why would he do that in a World Cup year? World Cup year, Louis van Gaal wants them to play. Remember? But to be honest, do the Dutch team even have that many quality of field? Wijnaldum has had a poor year. Van de Beek तो भाई missing for 2 years है. अरे आप Frenkie देखना ना, Jong is their main midfielder.
नहीं बर्ग्यूज है, देयर आर ऑप्शंस यार, ऑप्शंस की कमी नहीं है डच मिडफील्ड में, ग्रावेनबर्ग है, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, हाँ एंड ऑफ कोर्स दैट मुझे तो एटलांटा गाइज है ना, क्या नाम है यार, मैं नाम बोल रहा हूँ, ही इज आल्सो देयर, तो लॉट ऑफ ऑप्शंस है, प्रॉब्लम ये है कि ही इज द मेन गाय, आप बोलते हो ना यू आर बिल्डिंग ऑन मिडफील्ड बिकॉज ऑफ वाइनाल्डम नॉट बीइंग इन फॉर्म, ही इज द मेन गाय, तो इफ ही इज बट नॉट गेटिंग अगेन ही इज फुटबॉल, गॉन टू रोमा, जोसे कुड डू समथिंग अबाउट इट, हाँ जोजे कुड डू क्या समथिंग, दैट पता आई एग्री वाइनल्डम का डेफिनेटली। पता नहीं कहीं से कुछ निकल जाए। चलो, और मैन सिटी बीट करेगी बारसा को इन द यूसीएल सेमीज बोल रहे मानव, कुछ भी एंड देन करो रियल यार। बर्नार्डो अभी सिल्वा यार को रोको वहां जाने से। डिरून, या थैंक यू डिरून हाँ मार्टिन डेफिनेटली, डरून, या डैम गुड। या बिल्कुल बिल्कुल, सिल्वा जा रहा है, पेप वेल, बारसा के लिए काम कर रहा है दिल्ली। I don't know यार, मतलब let's not say that, you have to respect Pep यार, it's easy to say that, लेकिन the guy has changed football in England यार, मतलब आप, as much as I If don't I'm like it not saying it, that it's not mistaken, my manager. he stayed for a longer duration at Man City than at Barca, है ना? Yeah, exactly. People are हाँ, saying that so it's kind of unfair on him, but I get a point. अगर आप if you are a Man City fan, you can kind of get that as well to some extent. Fair enough. And yes, people, let's get to 200 likes. And of course, जैसे आदित्य बोल रहे, there is a discount on the membership as well. The Discord, or do not forget to join Madrid Pandit stream at 10 p.m. and also उनको भी subscribe करिए. Do not forget at all. Let's get them to 4K hopefully tonight and us to 5K as well. That's the idea. एंड यस एल क्लासिको 4-0 कमिंग, वाओ, दे यहाँ आ गया है चैलेंज बारसा फैन का, चलो देखते हैं, फॉर एज ए न्यूट्रल, मैं न्यूट्रल यहाँ पर, मुझे तो काफी मजा आने वाला है इस बार, क्वालिटी फुटबॉल देखने को मिलेगा, दैट्स समथिंग ग्रेट, एंड ऑफ कोर्स ऑलवेज ग्रेट टू हैव वेदांत भाई, वेदांत काफी चर्चा करेंगे सीजन में, बट अभी के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द सुपर कप, अच्छा नहीं लग रहा है चेल्सी लूज कर रही है अपना सुपर कप राउंड, बट वी डिडंट हैव एन ऑप्शन, डिड वी, और अगेन रियल मैड्रिड जीती थी बिकॉज वी gave them the path कि भाई चल जाओ आप फाइनल में, hopefully you guys win, that's what I would say, because as much as Frankfurt जीते, it be history made, let's be honest, Madrid kind of most people would like to see, I don't know, if you're a Barca fan you might think otherwise. Vedant, last words, come on, हो जाए. I'd just like to add one thing, be it क्या यार वेदांत, हम रियल मैड्रिड हैं, अभी थोड़ी दिन पहले दिखाया था पूरे वर्ल्ड को, मुझे बर्नार्डो सिल्वा से डर लगता है भाई, सही में बता रहा हूँ, डर लगता है मुझे उस प्लेयर से। He is one of the best midfielders in the world on form along with De Bruyne. Yeah. I mean, I do agree we've got the best midfield in the world in terms of squad depth, etc. We've got Kroos, Modric. मुझे डर लगता है बर्नार्डो सिल्वा से. But anyways, my last words would be, one thing common between Frankfurt and Madrid is that both were underdogs in their respective competitions, Champions League and nobody expected Frankfurt to win the Europa League, but they did an amazing job. They lost 7 games in a row in start of the season, and they've again lost against Bayern. They've been thrashed by Bayern. But I do feel that Frankfurt will give us a fight. I think we don't need to be overconfident right now. Yes, we have done what it needs to be, that we should have that confidence, but not overconfidence. I feel that Frankfurt is a great team when it comes to hitting back on the counter, and it all depends the way Carlo Ancelotti sets, the way he lines up his team. It all depends on that and his in-game adaptability, how that works out for us. बिल्कुल. UEFA Super Cup has been a competition which has not been that lucky for us, but I just hope we get the 5th and Florentino Perez 33rd and Madrid's 99th trophy. Yeah, that's the big thing. Oh, that's a great one. चलो उस नोट पर एंड करते हैं. Yes, people, Chelsea fans also, आप वेट करो काफी स्टोरीज के लिए भाई. हम again we are live at what exactly 2 hours from now we are live on Almighty Sports Plus, so you can set a reminder. वहां पर हम यार Almighty Sports Plus में हम काफी सारे बात करते हैं. तो प्लेटफॉर्म इज ओपन, तो वहां पर डेफिनेटली वी कैन टॉक अबाउट लॉट मोर ट्रांसफर्स एज वेल. देखते हैं नेक्स्ट 2 घंटे में कुछ होता है कि नहीं, होपफुली कुछ आए. But again, all the best, Vedant, for Real Madrid, and of course, even Frankfurt fans, अगर देख रहे हैं और देखेंगे, और German football fans, all the best to you. अभी के लिए I just want a good match, and yes, हम watch along करेंगे, तो कल मिलते हैं definitely. Till next time, take care. चलो.